Insaf Islamabad to its authorized person and others. हाँ सब जजमेंट आ गया है, आपने पढ़ लिया? जी जस्ट आई जस्ट जी gone through it. Very well written judgment, sir. My request is that Mr. Ali Jafar has been counseled before the election commission as well as the Shower High Court. whoever wants to argue, we have no issue. जो मर्जी आप आर्ग्यू करना Because चाहें. I'll just stick to the constitutional questions arising out of this case. So Mr. Zafar will first address the court. Your Lordship, the detailed order has now come, so we'll be able to focus more on that order. The short order, of course, did not have the reasons. My submissions, Your Lordship, let me sum up my submissions that I'll be making today. सॉरी एलिजाबेथ साहब, तो आप कीजिएगा, उन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट फ्रेम किए, पेज 8 के ऊपर आप जजमेंट पे देख रहे हैं. Judgment. Territorial jurisdiction of this court and maintainability of the petition to question the order of constitutional body. और दूसरा है whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party elections of PTA. जी. Please argue as you want to argue. Thank you, sir. ये बता रहा हूँ आपको, ये 2 पॉइंट Ji, I fully understand that, and I think my arguments would be limited to those also. Because I think I'm also running against time. Today is the last day for. You are running against time, but we have another additional burden. We have to actually write an order. Yes, of course. That is always the burden of the court that we lawyers can get away with. We just argue and leave. Your Lordship, my submission. First of all, just tell me, you represent everybody? Ji, okay, petitioners. No, not the petitioners, respondents. All of them. All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional point. Points that, Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the petitioners who have become respondents. Please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? Ji. For response, because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe, array of the parties is there. I don't. Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? They are the. No, just run through the names. We don't want to make a mistake. Raja, Faez, Nawaz, Qazi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek Insaf. No, 1 to 8 you represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent. I don't represent them. Okay, fine. Chale, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing. And I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize
intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number one I'll be arguing on. Point number two, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years, the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol, Just slow down. Contesting elections with a uniform election. unified symbol falls squarely. Unified Symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the Same one. Just ending, closing it now. this right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution
states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its malafide is apparent on the face. Malafide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A to a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens, and the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. Okay. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my argument, Your Lordship.
Now, Your Lordship, we'll see. The election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th 18th of December. So, Your Lordship, on
on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So, it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed
a federal commission. If I may interrupt you, yesterday Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word malafide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is malafide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now, you must show such malafide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, he had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to
in these related proceedings. I'm not challenging them, Ji. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper. I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, sort of, every election, everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general Broader picture. So you understood what I I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night and I will address both those questions. So, but for the present moment, Maybe we start with the facts first, then we can, if we can just start with members destroy my scheme of arguments. Okay, fine, okay, fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीकेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29 ये हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख पहली तारीख. सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. जी. फिर पोलिंग डे एट पिशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहां गई हैं ईसीपी में. जी. ईसीपी में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. जी. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP so moto. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहां पे. तो अब उन्होंने देखा इन सब चीजों को, उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. I understood the point. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं I've got that. You may ignore the with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling your mind, and we want to save time also. I appreciate. Because every election we will find some more this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक. So, Your Lordship, coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised the question which I will be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it.
Now, Your Lordship, they have done two things: taken away the, not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So, एक चीज है कि आपका election वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप please proceed. Now, what is the symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. Nonetheless, but a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं. बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहां से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का वो तो खैर आप वहां जाना चाहें वहां चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज रिसीव्ड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. The sword was, I think, the symbol तलवार. फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any action will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can you start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment, is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही. जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए. मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely.
if they're malafide, then we look at them at very suspect eyes. Or you take away this allegation. I'm not saying take it away, it's your call. I'll be totally non-political in my arguments, in Lordship, as always. There's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the facts, on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of... You can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Proceed. You are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. Achha. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page. I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is if elections are proper. I, for one, don't think that you should be deprived of the symbol. So, when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No. It was a question that a symbol was, the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be something different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol. Ali Zafar, I think maybe it's too fine a point of what. I don't disagree with you at all. But so I will. No, मुंह पर पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है जी. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं करो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौकिफ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए.
आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इनको हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिया, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have taken certain violations ना, तो Not the only violation of the appointment. there are certain violations. Not If you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear, ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually, they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22, पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर, पेपर बुक नंबर 1, नहीं सॉरी, पेपर बुक नंबर 3। paper book. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, an elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. 26. Going through the above mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter, 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission.
As discussed here and above, in accordance with clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provision of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into Efficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन के आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल जबर सब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी. आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तो अब सिंपल सी बात थी, अकबर अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं, शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन की उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, को हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे.
तो ये हमारा मसला है। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया। मैं आपको इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ? मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया। दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सो कमिंग टू द सिंबल से, साहब जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये जो जजमेंट इज इम्प्यून बिफोर अस, हैज आल्सो नॉट गॉन इनटू दैट। ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस। से दूसरी होगी ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया। you are supporting the judgment of the Peshawar Yes, High Court. I am. So then you have to show from different provisions of law that That is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूं, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Yes, exactly. That is your lordship what I am exactly that is my point. वकीलों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं। पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे। अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट है, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं। जो जज अगर साहब आप ने जो पॉइंट आउट किया, पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आपको। जो जज साहब ने कहा, दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट। ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे, जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक जगह है नहीं, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपकी केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। में तो जुरिसडिक्शन नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ। There is no jurisdiction there. थोड़ा सा That is what I'm saying. ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जो मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट। बैकअप कीजिए ना इसमें। मैं कर रहा हूँ सर। But if I can proceed 7 है ना आपका जजमेंट का, 7 सर हाई कोर्ट का। इसमें पहले ही ये इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, the petitioners have questioned the impugned order on legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECP had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इंप्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना फिर तो, मतलब ये प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। कैसे रोल नहीं है फिर वो, फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे है कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और शेयर करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी। बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि ये सजा होनी चाहिए या नहीं। It is the criminal court that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आपके यहाँ वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप। Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंपल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंपल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पेशावर क्या अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को ये लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ तो जाती है। मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल। सिंबल तो लिया हमसे, पेशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना। नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं,
इलेक्शन हमने कराए। एक मुतवातिर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले। Question is, can they take the symbol for non-election? नो, Even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा बराए Letter does not confer jurisdiction, sir. नो, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं, तो उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें। आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। उन्होंने आपको धमकी नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी। बेशक इलेक्शन कराना लगे, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गए पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर वो भी देख लेते हैं। परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको में आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो लेकिन आगाज करें शुरू से। मैं शुरू से कर रहा हूं सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। नहीं तो ये कहने से तरीकों का कानून का लेट अस स्टार्ट सर, लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं। राइट सर, शुक्र है। सो लेट अस स्टार्ट विद सर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें जो पहला रेलेवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 218। ECP को बनाया गया आइन के तहत फॉर सर्टेन पर्पस, एंड जो रेलेवेंट उसकी 218(3) में ड्यूटीज दी गई। 218(3) में जी और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की। बिल्कुल, ये जो बात है ये आता है 219(e) में, ठीक है। सो ये स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं। ये आ गया 218(e) के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. so your lordship, पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस। So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219(e), 218(3) doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 218(3) does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है। Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says that the election. All it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 219(e) ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा। ओके, फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहां लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है। ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे। अच्छा, मुझे आइन में दिखा दें कहां लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को। वही मैं दिखाने जा रहा था सर, बताइए। मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट को, फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17। पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 17 का पार्ट था। बहरहाल उस पे मैं आता हूं, बट माय पॉइंट इज दिस, आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर। आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। 219(e) के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ, ठीक।
That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है. ये सारी बातें सिंबल ये चीजें या ये एक्ट के नजरिए आ रही हैं. So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सर 209. जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है, जी पढ़ दीजिए. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेकंड पढ़ा अभी? 209. 209. मतलब 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? सर 207 पढ़े. मैं सारा आपको पढ़ूंगा. कहा ना, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है. वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश करते हैं, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजर मैटर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट. 207 या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी, मैं अभी आता हूं सिर्फ नहीं. लेकिन फिर वो आप मौक़िफ़ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कर, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं, वो फिर आपका एक अलग मौक़िफ़ है. नहीं, मेरा आप तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है. मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है सर दैट अंडर द लॉ मैंने इलेक्शन कराना है, बट इलेक्शन कमीशन जी ये लेकिन 207 कहता है. जी बिल्कुल कराना है. ये तो नहीं कहता है. मैंने अंडर द लॉ कराना है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर मेरे इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार दिया कानून ने, उसमें वो उसमें प्रूव करे. नहीं, इलेक्शन से मेरी बात सुन लीजिए. इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं मिली, इख्तियार नहीं दिया कानून ने कि वो उसमें प्रूव करे. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर किसी को इतराज है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें इरेगुलरिटी हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है. दैट इज माय केस बिफोर दिस वन ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़े उसमें पूरा मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं वही पढ़ूंगा. तैयार नहीं है वो तो कह रहे हैं कि आपको बुला सकते. देख लेना, इसलिए मैं इसलिए इस मौक़िफ़ में देखने जा रहा हूँ. आप 209 पढ़ रहा हूँ पहले. मैं 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं. 2091 पढ़ते हैं दोबारा. सारा जुरिस्डिक्शन के तो इशू आ रहा है ना, यही तो हम आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं. आप बराए करम 208 पढ़ लें. 208 भी पढ़ लें. 208 पढ़ लेते हैं. देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा ना. 207 से शुरू करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चलें, sir, then in that case, let us, because there will be relevance, let us start with 200. Formation of a political party. नहीं, वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना. फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. Alright. ठीक है. सो मेंबरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं सर. ठीक सर. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ठीक है. No quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ठीक है. I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this You does will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. पढ़ ले 208 पढ़ ले. से पहले 200 कमेंट करते हैं उस पे 207 पे. 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर political party ने कन्वीन नहीं की जनरल मीटिंग तो वो उसका सिंबल रिफ्यूज कर दे. That is 207 पे ये is my comment and my submission. 208 पढ़ लेते हैं आप. 2081. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable,
shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुआ है कि नहीं. आगे पढ़ते हैं सर. एक चीज law में clear आ गई. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. वो उन्होंने लॉ ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते. जी, वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने, 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए. इतनी सी बात उन्हें है, कोई बड़ी बात नहीं है उनकी. वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया. पढ़ेंगे ना, वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म. उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्हें कराए लेकिन इरेगुलर. नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए. हाँ. जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं ना उस पे. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है. I can't say कि women are not allowed. I can't say minorities are not जो allowed. 14 लोग हैं इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी. ये फैक्ट मैं वो कहते हैं, मैं पूछ रहे हैं आपसे. बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत. But question is, if नहीं दी, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3. All members of the political party at the federal, provincial and local levels. कहना है सिविल कोर्ट इन तुर्बत. जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो बात. ऐसे आपने कह दिया ना, गो टू सिविल कोर्ट. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी, आप दलाइल देना होंगे. Right. सिविल कोर्ट इन तुर्बत कैन undo the entire election of PTI or any political party. Because a civil court. सर, it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा. आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए. अगर suppose देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए. देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो. ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है. अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर अवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है. भाई हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो, हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट का सरांखों पर. ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी करते हैं या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं. हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना. अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है. आपको भी सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात. सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही. मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन से नहीं, कुछ उसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई. 3, all members of the political party. अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा. जी, मैं उस पर आता हूँ. पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं. हम देख रहे हैं कौन सा धारा. मकसद पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है. तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है. तो वो मैं कोशिश कर रहा था. प्लीज रीड दी फर्दर सेक्शंस. जी, अब आप 209 पे आ गए. नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है ऑल. अब इसका इसी 208 में जी जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने, पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ईसीपी को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा. अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम. सो एन अमेंडमेंट वाज मेड. 2 लाख रुपए की जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की. जी, पढ़ी है ना, सबसेक्शन 5 में ही है. सबसेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, Yeah. where a political party fails to conduct intra-party elections
as per time frame, given time frame in the constitution, a show, यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, not irregularity, but करे ही ना. A show cause will be issued. उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें. सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? Sorry, 5. 20. Subsection 5. 5 of 208. 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party. And if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees, but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. तो मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं. अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया. अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके. अगर आप इसको पढ़ें दोबारा और से 5 को जी विद इन टाइम जी, ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में कर, उन्हें 2 लाख की पेनल्टी लगा दी. ठीक है, यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है. फेज टू कंडक्ट सर, अब विद इन टाइम देखिए, पार्टी फेज टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल का, आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है. तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं. ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा. तो आगे आ रहे हैं ना, चले आगे देखते हैं. 208 में नहीं आ रहा. आप 209 पढ़िए पहले. अब 209 पढ़िए, क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना. अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना. तो वो 208 वाली बात खत्म है, बिल्कुल इलेक्शन में तो खत्म हो गई. दैट इज माय पॉइंट. 208 वाली बात खत्म है. उन्हें फाइन नहीं लगाया, आप नहीं लगा, 1 साल दे दिया, मैंने इलेक्शन करा दिया. मे बी 208 इज गॉन, मे बी 208 यू आर पॉलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट. सर 208 इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. अब आप 209 पे आ जाते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी शैल within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी. ये अब ये क्या कहता है 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें. ठीक है, बिल्कुल है. उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है. उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने आपके कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है. फॉर्म 65 फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना है. पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन. नाम क्या ये है? तो इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो तो बात की बात है ना, उसमें आया है. जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी जो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है. लेकिन ये जो नहीं देखिए, जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन. अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट, तो एक अलग बात है. ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूं. स्कीम यही है सर. स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है, हर चीज आती है इलेक्शन पे जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना. ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया. अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में. जब इलेक्शन हो लेकिन रहा उन्होंने था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब. अच्छा, But then असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना. लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर. मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं उस पर देखिए, अगर मेरा पॉइंट अगर आप अपने मेंबरान को हक के
इलेक्शन नहीं दे, बाबा हरा दें उसको ना, एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो अभी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका जवाब हमारे ज़हन में जो बात बिल्कुल मैं नोट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि वन में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ जी। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद वो कानून है। इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट दिखा देना कहीं लिखा हुआ ऐसी बात। वो सिर्फ लिखते जरूरत ही नहीं है, जो साहब प्लेनरी जुरिसडिक्शन के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना, मैं उस पर भी आता हूं, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पर आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना, या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे हैं ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है, और वो कानून ये है वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी। And we are bound by the law. Because सही है, वो exactly। 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But तो now election को कमीशन को तो इख्तियार है। constitution of your own party के ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं? फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये कंडीशन सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है। It is not to be given by the elected। ये ऐसी बात होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत से। नहीं ये पाकिस्तान आप ऐसी बात कर रहे हो, हमें समझ तो आए बात को। मैं तो इसे, मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस, आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए, आप नोट कर लें। वो कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिसडिक्शन नहीं। Just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just ठीक है, 209 की नॉन कंप्लायंस 215 में मेंशन है ना। If you will read 215, it will make clear whether the jurisdiction issue है। खत्म तो कर लूं 209 खत्म कर लेते हैं पहले, 209 वो खत्म कर लेते हैं ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections; B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels, wherever applicable; C, the election results; and D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? इस पे, हाँ, ये कौन से पेज? ये अभी पेज पर है, मेरे पास नोट है। किधर है, कौन से पेज? This is at page 65 जी। If your lordship turn page 65 है। 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म इटसेल्फ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए। Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held, नहीं, certificate is at page 68. 66 पे है। हाँ वो पढ़। Page 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी, अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए। ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22
17 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए। ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है। अब 2 पे आते हैं जी। लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6, उन्होंने सिर्फ हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमिशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना। अब 2 पे पढ़े। 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में। तो 5 साल से पहले करा दिया ना सर, 5 साल होते थे। 22 को होगा ना जी। 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13/22 को हुआ ना सर, 12 जून 2022 को करा दिए ना 3 दिन पहले, बिफोर द डेट। अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे हो सिलेक्शन को। नहीं, वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पहले आगे बढ़ते जी। तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हो गई। लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया। The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. ये भी साथ लगाया। लगा ही नहीं सकते ना, ये नहीं लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं। सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना। एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वो जब कास्ट होंगे। देखिए यकीनन 2-4 लोग आगे लिख दिया। देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं, ठीक है। वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े, या कोई कर ले, वो जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से। तो छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, आपकी इंटरेस्टेड हो सकता है इलेक्शन, अनकंटेस्टेड इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी अनकंटेस्टेड हो सकते हैं। मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी, जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार्स बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज जी, ठीक है जी। वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज हों, ठीक है। मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान जी, सब हो गए अनअपोज, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा। अच्छा देखिए, वही टेस्ट हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता। छोटा इसके साथ ही है, कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है, नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे। तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखिए जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं। क्या उनको वहां पे पता चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि अब आपने ये सवाल पूछा, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर। एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं। पीटीआई हैज वन ह्यूज लीडर विच इज इमरान खान। अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप जो एक वर्कर को या एक मेंबर ऑफ अ पार्टी को होती है फॉर द लीडर, nobody probably opposed that. Now we cannot insist. खुद ही लफ्ज लिख दिया probably जी, आपने तो अपना ये स्टेटमेंट ही खत्म कर दिया probably ऐड करके जी। तो अब नहीं, अगर देखिए एक तो ये तरीका है आपने खुद अगर सॉरी जी, फिर ये जमहूरियत नहीं है जी, फिर ये आमरीत है। अगर नेचुरली कुछ हो सकते हैं कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये इसको ना करो, मेरी बात मान लो, मगर अगर आप कहें कि वो जबरन कर रहा है किसी से, जबरन हो रहा है ना कि 14 लोग हमारे सामने कि हमें इलेक्शन तो लड़ने दें, हम हार जाएं बेशक। उनका जो प्रूफ है, उनका जो एविडेंस है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक सेकंड के लिए अज्यूम करें, वो दिखाइए हमें, अज्यूम करते हैं एक सेकंड के लिए, पहले ना इस बात को खत्म कर देना, एक सेकंड के लिए जरा सा पढ़ लीजिए ना, क्योंकि वो पहले अज्यूम से मेरा जवाब तो देने दीजिए। अज्यूम कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि कोई नहीं आया, जेन्युइनली नहीं आया, that does not make the election void.
क्योंकि आई कांट नहीं, आई वुड नॉट, आप उसको वॉइड कह रहे हैं, मैं उसको इलेक्शन का दर्जा नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जैसे कल आप इलेक्शन 8 फरवरी को रिजल्ट्स ले आइए जी, ठीक है, 326 का मैं अनअपोज, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानूंगा। जो मर्जी हो, लीगली तो इलेक्शन है, मगर थोड़ी सी अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। हो सकता है 8 फरवरी को ये 326 हो गया अनअपोज, सब बाकी कैंडिडेट्स को उठा करके सरकार पकड़ ले अपने घरों में। मेरा पॉइंट नहीं ठहरिए ना, ऐसे अगर होने लगा ना, ये फिर देखें, हम पूरी जमहूरियत पे चलेंगे, आधी पौनी लंगड़ी लूड़ी अब खत्म हो गया है, बहुत हो गए हैं चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत आना चाहिए। आपके लोग, अपने लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने दो, बस इतनी सी बात है। ये आप उनका शक्ल बुरी क्यों लगती है? सर उनको एक दो ले भी गए तो क्या मसला हो जाएगा? वो तो खैर जो भी कह दे, तो उठ के आके कह दे, या तो आप लोग कहें वो कोई गैर आदमी दूर से सड़क पे चलता आ रहा है, बिल्कुल गैर आदमी लगा हुआ है आपके पीछे, मेंबर्स नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी अच्छा, कल हामिद खान से वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है सर, वो भी पता चल गया। क्या चीज? He has got more stature than you. Of course, I'm nobody sir. मैं तो When did you join the party? मैं तो When did you join the party? मैं तो बहुत recent. When did you join the party? Sir, I can't remember about maybe 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not आपसे in नहीं any पूछ रहे party. ना आप, लेकिन पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना। या तो कहना अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी। I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. तो पार्टी में थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। जी जी, वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था। नाम बता देना। पीपल्स पार्टी में। तो अकबर अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें। हमारा कभी नहीं। सर आप उनको देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कम से कम बर्दाश्त तो रखें। उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में। अब दिखाएं, हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, दिखा दें। मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिए, दिखाइए ना, ये तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का, दे दीजिए जी। वो आपको दे रहे हैं सर डॉक्यूमेंट, टर्मिनेशन लेटर। तो फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं? अच्छा सर, नाउ एक दिखाइए, इस पेज पे है टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन किधर है? टर्मिनेशन नहीं हमारे साथ है। इस पेज पे। अच्छा, मैं मेंबरशिप, आप पहले पेज दिखाइए ना, एक बात तो खत्म करें हम इसको। टर्मिनेशन नहीं है, फिर इनको हम घर भेजें अकबर साहब को कि आप हमें कॉपी है इसमें नहीं है सर, टर्मिनेशन लेटर की कॉपी वो अलग से आपको दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा ना, ये अलग से दे रहे हैं जी। हम कल पेपर बुक से आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग, आपको आप दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं। पेपर बुक लग लिया है। नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को, फिर तो इनकी, फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट, बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है। करेक्ट सर, टर्मिनेशन कमिंग बैक नहीं, शो अस फिनिश दिस पॉइंट, व्हाई यू इग्नोरिंग आवर क्वेश्चन? नहीं है हमारी पार्टी की। मैंने आपको भेजा था सर, वो नहीं, वो तो पुराना है ना। मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है, हमारे मेंबर कैसे बनते हैं, सेक्शन ये 720। This is how members have to be followed. अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस, एक राब्ता ऐप है which can be viewed on the website also before this honorable court. राब्ता ऐप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है। उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा। दे आर वोटर मेंबर्स, they are the people who are entitled to If vote. you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. Sir, the website की कॉपी मैंने कहा, Website is not an evidence. No, सर देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी कहिए ना, अब क्या आप सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज। आई एग्री सर, अच्छा फिर आई कांट टेक दैट डॉक्यूमेंट, आप रिज्यूम कर लीजिए। नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए, मैं 209 पे आ रहा हूँ। नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए। 215 है। नहीं 205 पढ़िए जी। ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से, member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party.
So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of No, it doesn't. It's you have to show. If he's not a member, show us from the record. ठीक है. That you followed things. ठीक है sir. If I can't show, तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are It will not change. if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement will be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say, my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go any more statement than देखिए अली ज़फ़र साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है. ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई, but the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंटमैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी है फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. ये कह रहे हैं हो गए, मान ली उनकी बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाईकोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें ऐसे. मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स. माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये है कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Section 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में सर्टिफिकेट पब्लिश कर देना वेबसाइट. आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. इजीली पढ़ के देन दिस इज द कोर इशू. वेदर द ईसीपी हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट. दिस इज द सेक्शन. कोर इशू बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल कोर इशू है. 2151 notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पढ़ लीजिए तो उसके बाद आगे. okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements
referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी रीडिंग ये है, आपकी रीडिंग है, but this section has been challenged, whether the violation of this section. I agree with Or this. this is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, ये बात है. मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक कर रही करनी तो है, कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करेंगे. मतलब I'm good whenever you want. करना चाहिए तो जब बस और कर लें ब्रेक. Application for allocation of symbol. See, I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols. skip करें, हम 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात जी, if the political party complies with the provisions of this act. So Even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the Act. If the provisions of the Act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the Act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है। अली जफर साहब, वो बार बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी, ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है। हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं। असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई। आप कह दें अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है, तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप जो कागज उस पर ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते। चले आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर। बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है, बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा। कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का में एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए। तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में। अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म,
कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की। सर लेट अस नाउ, देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है। जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें हैं, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है। फिर ये नहीं होता बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी। अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस क्या जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया। अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई एक दूसरे से, बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया, सब कुछ आया। तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े 100% खड़े। बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस। ठीक है जी, ये सर। अच्छा अली जफर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स, अली जफर साहब एक जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ? हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है, तो ये मखसूस लोगों को कैसे पता लगा कि ये डेट है फॉर्म जमा कराने की, उसी डेट पे स्क्रूटनी एवरीथिंग वाज डन? अच्छा एक काम करें आप, जरा कंप्यूटर जिसके पास है ये जरा चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट है insaf.pk, ये आपके लिटरेट पे लिखिए www.insaf.pk। कोई नॉमिनेशन पेपर है इस पे? सिर्फ नॉमिनेशन पेपर? जी योर ऑनर, फाइल कर नहीं, ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें www.insaf.pk खोलें। क्या वेबसाइट नहीं है ये? योर ऑनर जी, अच्छा वेबसाइट है, मिलता है ये वेबसाइटों पे ये होते हैं। वेबसाइट खोली, इलेक्शन ये मैं आपको सर एक CMC, एक सेकेंड आपकी वेबसाइट पर देख लेते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है ना, फॉर्म तो नहीं डाले होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं डालते, डाउनलोड करके भरना होगा ना। हाँ, स्पेसिमेन जो है, हाँ जो स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन नॉमिनेशन। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, हम वो दे देते हैं कि जिसको अप्लाई करना है लॉ क्लर्क्स के लिए, वो पेज 34 पे जो आपको पेपर बुक दिए सर, ब्लैंक फॉर्म जो पेजिंग नहीं है। कौन सी पेपर बुक? आप कह रहे हो ना 8.5 लाख मेंबर्स हैं आपके, 8.5 लाख में से अगर किसी को भरना हो फॉर्म, वो वेबसाइट पे नहीं है आपका? एक आप ना बोलिए ना, प्रिंट आउट फ्रॉम द वेबसाइट, कह रहे हैं सर ब्लैंक्स जी, वो ये कह रहे हैं कि जो अली जफर साहब, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ना, आप हमारी वेबसाइट अभी खोल लीजिए जी। जितने मुलाजमीन कोई नौकरी की हम फॉर्म डाल देते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म, कि अब ये नॉमिनेशन पेपर है, खैर हमारा तो इलेक्शन नहीं होता, हमारे जो एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कोई फॉर्म नहीं है सर। जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन्होंने, इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं है, फैक्ट की बात है। वो के वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आप खुद हैं पार्टी। नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल थे चारों सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज में, जो इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर थे, और नंबर दो वो वेबसाइट पे भी थे। अगर आप इजाजत दें, अभी खोलिए, आपके सामने दिखाते हैं वेबसाइट, आप क्लिक करके हमें दिखा देना। अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वेबसाइट से हटा दिए गए, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये वाला प्रोसेस जो है, जिस इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा इस एप्लीकेशन, आपका जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का, सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू, ये सही बात है, उसी दिन नॉमिनेशन डालना है जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो आदमी वहां से क्वेटा वाला ने फॉर्म लिया आपके लोकल सेक्रेटेरिएट से जी। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आपने बताया दुनिया को कि आप हमारे लोकल सेक्रेटेरिएट से कलेक्ट कर लें नॉमिनेशन पेपर? सर वो जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं, दे आर फुली अवेयर ऑफ लोकल ऑफिसेज। हम देखें
जबानी बातों पे नहीं जाते। आप इतने वाइड स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई बैकिंग, कोई कागज का टुकड़ा कुछ तो दिखा देना। वो दिखाएं कि जी आप जाके वहां से कलेक्ट करो। वो क्वेटा वाला फिर उसको जमा किधर करेगा? इस्लामाबाद में करेगा, क्वेटा में करेगा, कहाँ फेंकेगा? नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद से आएंगे, फिर वो इस्लामाबाद आना पड़ेगा उसको। प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव, आपका इलेक्शन शेड्यूल है जो मैं दोबारा देख रहा हूँ जी। ये 29/11/2023 को ही रिलीज हुआ है जी, इशू हुआ है जी। और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी उसी दिन को इनवाइट कर लिए 29/11 को ही जी। और नॉमिनेशन फॉर्म को रिसीव होना है 1/12 को एट इस्लामाबाद। सो देयर वर 3 days और किसी को भी रोका नहीं हमने। दे वर आल्सो अवेलेबल। नॉमिनेशन फॉर्म का वसूल जो है ना वो नहीं लिखा। फीस कितनी? 50,000, 50,000 जी। हाँ 50,000। अब देखिए आप 50,000 वो दिखाइए, बैंक में जमा किए, कैश में लिए? इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी, मैं आपके शेड्यूल में ये कह रहे हैं कि जमा किए, कैश में लिए? कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे? कैश में कैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही है? अकाउंट में देना होंगे, कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना। बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी। एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हमने पास। इसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,012 को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे ये, मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए प्रोसेस जो है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको आप प्लीज, क्योंकि देखिए लॉ के मुताबिक चलना है, वैसे अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट रेडी टू दैट। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो। सर ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, आप देख चीफ आप उन पे बर्डन ना डालिए, वो अब आप पे लगना एक्सप्लेन चाहते करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, अपना शेड्यूल है, प्रोसेस क्या है। आपसे बात हो रही है ना, इट्स तो मैं मेरे से बात हो रही है सर, तो लेट अस स्टार्ट विद भी देख लें, साथ खड़े में आपके बेशक देखें, ये तो पेपर आपके हैं, हम अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं पेपर। तो बिल्कुल ये है 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी सर। अब आप पढ़े पहले ये देखिए जी, 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है। चले मान लिया ये पहले दिन हो गई, एक सेकंड यार हो जाए सर प्लीज, वन बाय वन 29 को, इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। प्लीज लेट मी explain to you, Right. you can answer that. ठीक है। नंबर 2 पे है नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद। ठीक है। फॉर ऑल ऑफिस बेयरर्स टिल 5 PM विद स्पॉट स्क्रूटिनी। 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में, या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को, ठीक है। और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आप भी मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है। अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से। ये एक दिन करना है, दोनों दिन, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को, ठीक है। अपील रिजेक्ट हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म की अपील चली, अपील भी डिस्पोज हो गई। नॉमिनेशन फॉर्म को पैनल को लगाना भी 1/12 को ही है। पोलिंग डेट 2/12 है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई CAC 2/12 और इलेक्शन रिजल्ट 3/12। ठीक है, ही है सर। इसमें फिजिकली पॉसिबल है? आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह। सर अगर किसी आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं ना, आप हर सूबे में वहां पे बूथ बनते हैं ना वोट डालने के लिए, कि सिंध के लोग सिंध में डाल रहे होते हैं, पंजाब के पंजाब में, लाहौर में हाई कोर्ट्स में बनते हैं ना। आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और फाइल इस्लामाबाद में होनी है, इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है, वो चिमकनी पिशावर में हो रही है। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं। अब आप इस लॉ को अगर देखें तो हम ये कहें कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। पिशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है देखना, तो आपको हमने 215 में पढ़वा दिया। नहीं पढ़ा, मैं आपने पढ़ा ही नहीं, कहाँ है 215 में? चले पढ़िए। और सर 2 चीजें आपसे मैं इसको ऑब्जर्वेशन की रिस्पॉन्स कर दूं। तो ये कह रहा हूँ, पहली बात जो आप कह रहे हैं चाहिए ना, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही होना चाहिए, जिस तरह वो इलेक्शन देख रहे हैं, आपके साथ नहीं, किसी और के भी इलेक्शन डिफेक्टिव हैं, बिल्कुल ECP को देखना चाहिए और इसी तरह के ऑर्डर्स पास करने। पहली बात तो ये सर, वो हमने कल पूछा इनसे ECPC के, औरों के खास हुआ है, उनका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनकी
कि ये फॉर्म 65A के ऊपर अगर आए हैं तो वो भी इनसे पूछ लेंगे अभी। सर जो आपकी जो आपने शेड्यूल को ऑब्जेक्ट किया और आपने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं किया, आई एम नथिंग टू से, नॉट ऑब्जेक्टिंग इट। My lord is not objecting it. देखिए, my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. चले वो भी हम मान लें ह्यूमनली पॉसिबल है, बट द क्वेश्चन इज कि वो क्वेटा वाला आदमी आएगा, इस्लामाबाद में पेपर देगा, फिर इलेक्शन किधर जाके वेन्यू किधर होगा। फिर हमने एक मजीद आपने जो एक अभी पेश हमें किए कहा पेपर बुक, उसमें आपने लिखा नॉमिनेशन फीस, आपने क्या पता 50,000 रुपए, तो किधर है 50,000 रुपए? वो बैंक में आप कहेंगे ना बैंक में जमा कर दो या मुझे कैश में दे दो, कुछ तो किसी चीज का तो हमें कागज दिखा दीजिए ना। इसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन या तो आप एक देखिए, या तो कहेंगे जी हम इलेक्शन नहीं, I always try तो वेरी 50,000 रिसीव। I always try to argue, sir, in a way that respects the court. And अगर मुझे आप एक observation आई जो मेरा impression हुआ, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. We are very, you are very, you know, you very properly argue the cases. तो मैं absolutely no, nothing personal. हम आपसे बिल्कुल मुतासिर हैं हमेशा। I just wanted to say कि जो observation थी, जो observation है, What observation? If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ठीक है। So about my letter which your lordship is reading to me, इलेक्शन शेड्यूल में तो कुछ नहीं कर रहा ना मैं कर सकता हूँ। about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है तो वो रूल्स बना दें और कहें कि कल को हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल इस तरह बनाएगी, तो फिर तो मुझे समझ आती है कि मैं आई एम फेलिंग टू कंप्लाई विद सम रूल्स। अभी चूंकि सारा कुछ छोड़ा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मे बी आपके मुताबिक ये शेड्यूल वाज नॉट राइट, मे बी दिस इज अनरीजनेबल, मे बी योर लॉर्डशिप कैन मेक सम ऑब्जर्वेशन। देखिए, लेकिन हम आपको आपका शेड्यूल सर आंखों पे जी, हमें उसकी कंप्लायंस दिखा दें। ठीक है, वो अब मैं आता हूँ सर। हाँ भाई, उससे आ जाएंगे। लेकिन मैं अब सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का तो स्लोगन ही ये है, जुर्रत देना लोगों को, जी है बिल्कुल, लेवल तक आपने इनको एम्पावर करना है सबको। यहाँ इतनी सीक्रेसी है आपकी इलेक्शन में, इतनी बॉल्डनेस है, आप लगता है कोई नहीं, कोई सीक्रेसी नहीं छुपा के। मैं बिफोर दैट मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आ रहा था। Just to a lighter mood, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this. वो ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी देखें, हम दूसरी बात कर लें ना, वी आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल जी। अगर आप पे हमला किया होता आपके मुखालिफिन ने, ठीक है, वो एक अलग बात हुई। वो देखिए ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे, फिर आप कहते तुम किधर इलेक्शन कर रहे हो, वो एक अलग बात है। आपके अपने लोगों ने कहा कि जी मैं इलेक्शन तो लड़ने दें, बस इतनी सी बात है। आप हमें दिखा दें कैसा भी किया, आगे पीछे हो गया। Let us look at the जो मैंने पेपर बुक भेजी है सर, कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं? स्टार्ट करते हैं सर 20। अब वो वी आर स्टार्टिंग विद दैट टाइम जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें, अब 20 दिन टाइम गुजर रहा है सर। हाँ, 20 दिन का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। नहीं, वो तो कब से लगे हुए हैं। नहीं 20 दिन का टाइम अगर आप इधर से ना शुरू करें, वो तो 2021 से आपके पीछे लगे हुए हैं कि भाई इलेक्शन का। ठीक है, चले, वो आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी बात ना माने। नहीं, मेरी बात बिल्कुल ना माने, कागज का टुकड़ा है। तुम साहब कौन सा पेज है वो? नहीं बिल्कुल, वो जो इलेक्शन कमीशन का पहला खत था कि इलेक्शन कराएं, जब पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक है सर, उसको यू प्लीज डिनाई इट। नहीं, आई कंसीड। मैं कहता हूँ 20 दिन का टाइम था हमारे पास। देखिए, शायद आपने पढ़ा ना हो, दिखा देते हैं। ये केस, ये पॉइंट जाएगा मैलिफिडे पे इलेक्शन कमीशन के। There was a document you referred to yesterday. My lord, that is a letter, show cause notice. Report May 2021. Where would that be? Page 391 in part 2. 391 part 2. देखिए, असली बात शुरू होती है आगाज यहाँ से।
ठीक है सर। सो बेसिकली जो भी हमने गलतियां की उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें। अब 20 दिन में नहीं, हमने उन्होंने election आपको कराना है। देखा शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है। ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोविजंस एज पोलिटिकल पार्टी शैल बी इशूड शो कॉज नोटिस बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन सिंबल वेयरऑफ शैल बी विथड्रॉन, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24 मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है। इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम 1 साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दो। उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया। उन्होंने सब ये आया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज। ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई। चलें ठीक है सर। दो नहीं देखिए ना, इसको आप I'm not contesting that. नहीं कंटेस्ट करें। आपने contest नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट। वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको आप भी अलग है। हाँ, I am not contesting this fact कि उन्होंने लेटर लिखा। I am not contesting the fact कि हमें टाइम दिया। देखिए एक होता है, देखें मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज। So we are not bothered with this provision, that provision. Right. We are interested simply in democracy. डेमोक्रेसी ठीक है। You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है, बिल्कुल। If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाए, उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया। अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है कि ठीक है। अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी होने का, जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली सबको नहीं ये तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। मेरा अभी पहला पॉइंट है 215। जफर साहब अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी the whole case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. Election tribunal नहीं sir. This and the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. इलेक्शन कमीशन से Election Commission has no jurisdiction. ठीक है ना? तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now the section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर। They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं सर। If you violate section 209. हाँ जी ठीक है। If I violate 209, Yes. that is important. If you- ये है वो। ठीक है, तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है, that is not. That does not. challenged. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 2. Let us read it now sir। अब आपने पढ़ लिया था मैंने। Now let me submit। 215 को पूरा पढ़ लें। मैंने पढ़ा, अब मैं इसकी सबमिशन करता हूँ। नहीं, ये सब सेक्शन 5 नहीं पढ़ा आपने perhaps. पढ़ लिया सर, फिर से पढ़ लेता हूँ। चलिए। If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Masle Shura Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, राइट ऑफ हियरिंग देते हैं आपको। मेरा पॉइंट वो नहीं है। Consequences के पावर्स भी हैं उनके पास। मेरा वो पॉइंट है ही नहीं जी। अच्छा, मेरा पॉइंट का जजमेंट है बिकॉज यू आर मेकिंग सबमिशंस, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि यू विल मिक्स योर आर्ग्यूमेंट एंड रेस्पॉन्ड इट क्वाइट प्रॉपर्ली। राइट सर। पेज 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज जी, वो ये कहते हैं द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 एंड 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. मुझे पता है, मैंने बहस If की। you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Right. Pakistan. That is my first. Under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of their own constitution, then obviously you are out.
बिल्कुल। अब सर, अब ये हो गया आपकी बात, नहीं, अब आप जवाब, थैंक यू वेरी मच। नाउ सर, मेरा 215 इज द क्रूशियल सेक्शन। 215(1) जो कहता है, बेसिकली इट सेज कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर यू आर एलिजिबल। नाउ सेक्शन 2151 डज नॉट से कि आपको बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कैन start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर सर्टिफिकेट्स दे दिए अंडर 209 एंड द अदर सेक्शंस, तो फिर आपको वो एलिजिबल हो जाते हैं। So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर लेजिस्लेचर ने कोई ताकत देनी होती टू द ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें, तो वो 2151 में कह देते, या 215 में किसी और जगह कह देते। अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि वेयर अ पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ certificate की बात करता है, हमने पढ़ा. And we agreed that And what is the certificate? The elections have been held to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the certificate principle and the very important aspect of section 209. लेकिन section 204 so called notices to that limited extent कि अगर मैंने सर्टिफिकेट ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिडिक्शन नहीं है। सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया। और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने सर, में अगर आप पढ़ें 209 में political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209, 209 only. 210, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain तो सर यहाँ ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशियस हूं, इतना ही मैं वो हूं ऑब्लिवियस टू द लॉ कि मैं सर्टिफिकेट नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे, नॉट एनी इरेगुलरिटी। फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दे दूं तो कंप्लायंस हो गई। मैं इसके बरक्स बात कह रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट आप ना दे पाए, कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म जी। मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है, सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए जी, वो आप हमें दिखा दें इलेक्शन हो गए, बस इतनी सी बात है। वो एक कागज का टुकड़ा अक्कासी कर सकता है, वो कुछ और अक्कासी कर सकता है, वो ना भूले हुए आप ना भी दिया होता आपने सर्टिफिकेट तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती। असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूं वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है। 2021 से आपको नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन। चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया। ठीक है, अभी आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई तो हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपकी जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी। ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। अब या तो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें। आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है, वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक इलेक्शन एक्ट बना दिया, चलिए ये भी 2017 का कानून है।
तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज दिखाते हैं, दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, तो मुझे दिखाते हैं जी कैश में। किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे। मैं तो अभी उस पर आया नहीं, अब वो मैं भी आ रहा हूँ उस पर, लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखिए, ऐसे देखिए अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने खान साहब को कह दिया था कि आप इसको, बेशक हम आपको टाइम देंगे, तो फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब ना दें तो हम सुनते ही आपको, मगर फिर हमें सस्पेंड करना होगा जजमेंट को। हमने सस्पेंड नहीं किया जजमेंट को, इसीलिए बिकॉज आई थॉट कि आपको इसको एंजाइटी होगी कि इसको जल्द फैसला हो जाए। बहुत ये तो अब आप इसको एक वो हमें सारे जो हमारे जो एंजाइटी है उसको आप अटेंड करें, ठीक है। आप अदरवाइज आप आर्ग्यू करते रहेंगे, मगर फिर वो आपके, फिर आप ये ना गिला कीजिएगा कि क्यों सस्पेंड कर दिया, फिर वो उसका नहीं करूंगा, ये निकलेगा। ठीक है जी, आई विल गो स्ट्रेट टू दिस। अब मेरा पहला पॉइंट सर खत्म हो गया, विच इज दिस कि अकॉर्डिंग टू माय सबमिशन देयर इज नो जुरिसडिक्शन। अब मैं आपका पॉइंट पे आता हूं, एड्रेस करना योर फीलिंग के इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक पेपर बुक दी है सर आपको, इसमें जी दिए ना, जी आपके सामने होगी सर, ये वाली ना जी, हाँ आपने फाइल की है ना जी, ठीक है। अच्छा, नाउ सर व्हाट हैपेंस इज, मैंने शुरू किया था कि अब 20 दिन में हमने इलेक्शन कराने हैं, तो ये 28 नवंबर को हमारे पास जो पहले जो हमारी एक द वे टू इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 इलेक्शंस हैं। एक है चेयरमैन का, चेयरमैन का इलेक्शन है, वो सिंगल इलेक्शन होता है कि आप एक 1 against 1, और जो एक है पैनल इलेक्शन। पैनल इलेक्शन मींस कि आप अकेले नहीं आ सकते, आप एक पैनल लेके आएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मैं जनरल सेक्रेटरी। दिखाइए ना चेयरमैन का इलेक्शन दिखाइए जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पेपर बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं भी नहीं जो आपके इलेक्शन के प्रोसेस के होते हैं, जो कि हम सेटिस्फाई होना चाह रहे थे, वो है ही नहीं इसमें। चेयरमैन का दिखाएं, चेयरमैन, लेट्स स्टार्ट विद द चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये इसमें पेपर बुक में कहाँ है चेयरमैन का? नहीं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्शन होते हैं एक चेयरमैन का और एक पैनल का। हम पढ़ चुके हैं जी, हम आपको टेक्निकलिटी से निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। वो अब मखदूम साहब टेक्निकलिटीज में हमें ले गए, वो 5.1.1 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हमने ज्यादा उस पर वो नहीं अहमियत दी जी। फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ बोले जाना चाहते हैं आपको। इसमें तो आपने खुद ही एक ये कटिंग लगाई है कि एस बाबर अकबर जो है वो सेक्रेटेरिएट पहुंच गए फॉर्म लेने के लिए जी। ये तो खुद उनके जी वो आए तो हमने फॉर्म उनको रिस्ट्रिक्शन, और वोटर लिस्ट इलेक्शन के तरीकेकार की मालूमात हासिल करनी है। अकबर एस बाबर, ये जियो की आपने लगाई है, वो आ गए तो इसका मतलब वो उनको नॉमिनेशन पेपर अगर चाहिए थे वो ले लेते, वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किया। वो तफरीक पे तो दिया है जी, वो कह रहे हैं कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने गया, मुझे नहीं दिया जी। अब हम कह रहे हैं दिया, हम कह रहे हैं तैयार थे, तो क्या होता है ना, तो हम कह रहे हैं देखिए ना, एक सेकंड ना, आपने जब दिया ना तो 50,000 रुपए की फीस का है, वो नहीं थी उन्होंने। नहीं देखिए ना, उनको वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ मेंबर, सो इसलिए वो ही डिडंट कम एंड ही डिडंट गिव, ही केम, ही शोड दिस। यहीं पे मेरा ख्याल है उनके वकील, आपके अपने भी वकील साहब, मगर ये बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज ले रहे हैं ना। नहीं वो चेयरमैन साहब कुछ और 50,000 रुपए कहाँ है आपकी, जब आप इलेक्शन लड़ने का फॉर्म अगर रसीद नहीं है अकाउंट में जमा हुए हैं ना। पहली चीज तो ये है सर, इनका मेंबरशिप कार्ड किधर है? मलॉर्ड्स आप हमें दिखाएं कि आपने इसकी मेंबरशिप कैंसिल कर। मेरे पेपर बुक जमा कराई थी, तमाम जो कागज कहे थे, किधर है? मैंने इनको भी दीजिए। नहीं, अभी तो ये नहीं, मेंबरशिप कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आपने फॉर्म लिया, 50,000 रुपए नहीं दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने कहा था तलब किया जाए रिकॉर्ड में ईसीपी की वीडियो फुटेज कॉपी दे दें जी। इनको हम सुनेंगे बाद में, आपको देखिए, लेट हिम कंप्लीट द आर्गुमेंट जी। जी, ये जब तक देख लेंगे आप तसल्ली से बैठे, आपने नहीं बाद में देख लें, मगर आप अपने कंक्लूड करें। मैं कर रहा हूँ। अब सर हमने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया सर, जो आपके सामने है एनेक्स 5 में, जो आपने पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा कि जी जब ये कहते हैं ना हमें कि आप इलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू होता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आई, फिर आगे
फिर आगे चलते जाए। So on, sir, first Annex 1 देखें अगर तो 28th November 2023, it was announced in the public कि हम election कराने जा रहे हैं. So 28th November 2023 was the first announcement कि ये intra-party election होने, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact कि elections होने जा रहे हैं. And Annex 2 अगर आप देखें तो the next day it was announced that chairman कौन होगा PTI का nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि जरूरत नहीं है कि आप टीवी मीडिया पे करें, लेकिन we, for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते Saturday को हम ये election कराने जा रहे हैं. Then, Your Lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा news में आया. Then the next on 29th, on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I'm coming. I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. मैं बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे बात तस्लीम कर लें? देखिए, हम अब न्यूज में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है. But I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. अब देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I'll hereby nominate. कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर. वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate who was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sir? He's a founding member. Because देखिए, ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी, कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी, देखिए, Khan साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब, so these questions also arise. Tomorrow, Mr. Imran Khan comes out and says, I never nominated him then. That is an observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So, Your Lordship, 29th ko phir 20, the next page, Annex 5, is the 29th ko, the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule. And the schedule jo hai, sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम. ये उसमें लगी हुई पिटीशन में. कौन से पेज? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं, ठीक. वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो, नहीं भी क्या कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो फिर अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's
just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your Lordship, the next page is the Federal Election. Federal Election Commission. That the next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see Mr. Niazullah Khan Niazi, is he an old PTI member? G. He is an old PTI member. When did he become join PTI? आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज। 2009। तो देखिए ना, देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को। तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो, देखिए यू whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI, ठीक है? तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना, लीड कैप्चर हम कहते हैं, पॉलिटिकल कैप्चर भी हो सकता है और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ अ मेंबर्स राइट्स, नॉट टू कंसर्न बट जनरली यस इलेक्शन हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे। ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो, ठीक। That, I mean, I fully appreciate what your Lordship is saying. So I'm taking your Lordship through the factual position right now. जी फरमाइए, ताकि your Lordship at least get satisfied कि एक इलेक्शन का process हुआ, and not going into the nitty gritty of it. Now, your Lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was nomination papers की copies हैं. So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager. एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म। एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें, तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह पे साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन। सो योर लॉर्डशिप कैन सी के ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का। जी, दिस इज हिज पैनल। उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 December 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे से, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया। Your Lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया। No other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है। जी, ये जीता है, ये जीता है। तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक, उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस में अलग है सर, हर पैनल अलग से आया। इसी पर दिस इज द फॉर्मेट। 91 persons आर इलेक्टेड एंड अपोज, 91 है। करेक्ट। आपने जो इलेक्शन को दिया एससीपी को, एवरी पर्सन हैज द सेम काइंड ऑफ फॉर्म। नहीं, पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना आपकी पेपर बुक से। आपने एक उमर अयूब, ये सेंट्रल था सर, एक पैनल एवरी प्रोविंस। टोटल नंबर ऑफ अनअपोज कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी। टोटल पैनल्स थे सर, टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल, टोटल पैनल टोटल जी एक पैनल आए।
5 और पैनल उसमें जो जी आप सर 4 सूबों के लिए पैनल्स थे 20 पर उन्होंने 20 बंद हो कोई गए। इसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनपोज आए 91। कौन से बाकियों का भी दे देंगे उन्होंने एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को। ये है सेंट्रल पैनल का। इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते। क्यों? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके पैनल के फॉर्म में आ सकते हैं आप। सो इफ आई वांट फॉर एग्जांपल टू से कि जी मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का लड़ना है, आई कांट कम अलोन। तो ये जमहूरियत के मुताबिक है सर ऐसे तो होता है कि पैनल होता है, मगर फिर भी पैनल को वोट तो करते हैं ना लोग। अब जैसे बाहर के भी इलेक्शन होता है, सबको पता है ये फलां का पैनल है, फलां का पैनल, मगर सब इंडिविजुअली बाहर का तो इंडिविजुअल है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है। तो ये कुछ समझ नहीं आई बात। वो तो फिर भी ठीक है, उनकी वाबस्तगी एक नजरिया, एक सोच या एक शख्स के साथ है, वो तो समझ आ गई। मगर इलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना, सबको इंडिविजुअली लड़ना होता है। पैनल के 3 मेंबर आ गए, 2 रह गए, ऐसे आइडियली तो ये होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं, हैं। ऐसी अजीब सी बात है। तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है, 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल, खत्म, अब इलेक्शन हो गया। फिर आपको याद होगा, आई डोंट नो आप क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, बट कुछ क्लब्स में होता है लाइक जिमखाना, जहाँ पैनल तो पैनल आता है और उसमें वो आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है डिफरेंट, लाइक जमात इस्लामी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पैनल आते हैं ठीक है, मगर इसके अंदर आपके पास वो 91 जो है ना, वो भी नहीं नजर आ रहा। वो भी अभी दे देते हैं। 13 आदमियों का आपने ये लगाया है जो उमर अयूब खान साहब का जो पैनल है, बस वो भी आपको दे देते हैं। 91 का पता ही नहीं जो अनपोज है, वो भी आपको दे देते हैं। ठीक है, नाउ सर कमिंग बैक टू दैट, आपके मुताबिक कितने पैनल लड़े इलेक्शन? टोटल सर 5, एक सेंट्रल और 4 सूबे। और एक पैनल हर सूबे से। ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना। अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर। अभी आ रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट कल की थी, बट वो आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर। आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। मैंने कहा तो था, लेकिन वो आए नहीं अभी तक, आ जाएंगे थोड़ी देर में। इनफैक्ट एक फाइल पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है। कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है, अभी आ जाएंगे, मौजूद नहीं है। अब ये वाला एक आ गया, बाकी 4 के भी आ जाएंगे, अभी आ जाते हैं। मैंने कहा है वैसे साहब को अभी करते हैं। ईसीपी को सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिए, कल हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ हुआ है। ईसीपी के रिकॉर्ड में है, ये हमारे पास ईसीपी का रिकॉर्ड आप I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it. उनको बोलने तशरीफ रखे थे कि वो देखिए दे आर इंडिविजुअल्स, हम उन कहना नहीं चाहते ना, बिकॉज यू आर ओन पर्सन, या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है। एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है, तो वो इसलिए वो आराम से सुन नहीं पा रहे। इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे। वो तो सर ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना। ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना। अली जफर साहब आपने जो आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे अगर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुनना है, मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। मिस्टर अली जफर, एक पार्टी से मेरा shall we issue notice? सर आई अपोलोजाइज। अब if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आपके क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आप। I mean, if we this is show, what can I say? नहीं, I think कह सकते हैं। मैंने तो मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, ना क्लर्क के, मुझे पता है सारा। Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. ठीक है, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court,
please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine, we've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think We are hearing you with patience. I know. We have a question, we put it to you. yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, No, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछी है ना पूछे तो फिर Absolutely, that is the way it should be. That is in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to, you've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition with a whole election. It's Sharif Valley petition. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but if we don't ask a question, how will you understand the case? मेरी तरफ से तो I'm actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. So we'll half an hour break, lunch break करने? ठीक है sir. Okay. Thank you. Half an hour. Half an hour. Thank you. Thank you sir.
कितना वक्त और लेंगे आप? Your Lordship, I think I'll conclude in about 1 hour. ठीक. So, I think nothing like a break. जी. Now, I hope you had something to eat. No, I couldn't, but I think I've managed to give some water to some people. So now, Your Lordship, I was just going through the process of the election, and I'll stick to only what the facts are. So what happens now, sir, the venue has been, the schedule has been announced on 29th, which is Your Lordship will see at page 7 of this paper book. And Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of 2 stages. One is nomination papers have to be filed. And the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if Your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? रानो का जस्ट नहीं, कोई कंट्री एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज है, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves that there are 2 options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office, which is the ground. So we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then Your Lordship, eventually, if Your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if Your Lordship looks at page 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ईसीपी को? ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया, सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड
करना है। कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए। जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आती की पेपर बुक जी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने हमसे आपने कहा। उनको बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है। जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी लेटर से आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब नहीं दिया। नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया। 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें। जी, उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली एंड वी सेड। उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी in all the newspapers actually published it. PTI intra-party page 16, PTI intra-party इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है। पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे। So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये फर्स्ट का डेट खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे, हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था। अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है। टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस ही वाज अलाउड इन टू कम इनटू द ऑफिस. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया. कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे, वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूं. लेकिन अगर वो करना चाहते हैं, उनके पास पैनल होता तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली, वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके. पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में सर. आई विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 जी. Item 5, last election of chairman. एंड अगर आप 5.2.2 पे आ जाए सर, सीधा नेक्स्ट पेज पे 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates organization including wings as given in the relevant clauses. So your lordship, I'm going to pass some. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन. नहीं सिर्फ चेयरमैन के. क्यों? कहीं लिखा है ये? सर पैनल है ना जी. नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि individual कर सकता है. पैनल कहीं इसका
एक्सप्लेन किया गया है, कहाँ एक्सप्लेन? नहीं सर, हाँ, एक्सप्लेन नहीं किया था। ये 5.1.1 भी पढ़ लें। जी, Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be, ये किधर हुआ? ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये भी उधर ही हुआ सर, ये भी नॉमिनेशन पेपर, इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं, इधर नहीं है। So there are two, ये तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया। नहीं सर, nobody came and opposed him. इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स अगर आप देखें तो नॉमिनेशन पेपर्स इनके भी ये जो हैं, इफ योर लॉर्डशिप टर्न्स टू पेज 17, यस, पेज 17, नहीं, दो अलग अलग बातें हैं ना जी। ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन, ठीक, मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है। इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स। तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है, बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े, तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे। फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन नहीं, इसमें आपके अपने आइन में आप जा रहे हैं, हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे जी जी, मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी, ब्रैकेट में लिखा है द लीडर शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स। जी, सीक्रेट बैलेट जी, ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी। तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना, अगर से कंटेस्ट ना हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन, एक शख्स ने, मैं मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड, उनको वोट तो डालना होगा फिर भी। क्या जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया सर, इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू। सो नहीं, देखिए, वोटिंग ये भी हो सकती है, मैं आपको नहीं पसंद करता, मैं वोट ही नहीं डालता हूँ, ठीक है, अगर क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं है तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब आप जैसे खड़े हो गए, अब आप पे ले लेते हैं बात, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आपकी पार्टी आपको नहीं पसंद करती, बुरा ना माने, आपकी मिसाल सिर्फ दे रहे हैं। जी, ठीक है, आप बोले तो क्योंकि कोई और आपके खिलाफ होता तो हम उसको दे सकता था वोट, मगर क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं आपको वोट नहीं देता हूं, तो आप इलेक्ट तो नहीं होंगे। फिर भी आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे 1 लाख वोट पड़ गए या क्या, क्योंकि इसका मतलब है हर मेंबर ने आपने नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दी, एक वोट भी आप नहीं सिक्योर कर सके। मतलब सर, जनरल इलेक्शंस भी होता है ना, उसमें भी कुछ मिनिमम वो रखते हैं, पता नहीं क्या होता है। मैं आई विल टेक ओनली, आई विल ओनली, खैर आगे बढ़े सब, ठीक है, बट आई विल रेफर टू सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ। I'll read it, your lordship doesn't have to open it, कि वहां भी लिखा हुआ है कि where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. ये लिखा हुआ है ना, अगर आप भी लिख देते यही चीज तो फिर बात सही थी, अगर आपने फर्क दिखाया, आपने लिखा शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट्स। आई मीन आपको कास्ट करो भाई, कोई भी ना हो, आप मुझ में अपनी वो कॉन्फिडेंस दिखाएं या ना दिखाएं। सपोज 1 वोट नहीं पड़ता, फिर आपको दोबारा इलेक्शन कराना होता, या सपोज 10 वोट आपकी मेंबरशिप के 8.5, जैसे आप कहते हैं 8.5 लाख में सिर्फ 10 वोट पड़ते, तो उनका इखलाकी जवाज नहीं होता कि वो चेयरमैन रहते। यार आपको सिर्फ 10 वोट पड़े 8.5 में से, लाख में से, तो अगर मैं लड़ रहा होता तो मैं कहता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है मेंबरान का मुझ पे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए। माय रीडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद ड्यू रिस्पेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट। आई वुड से कि अगर नहीं इलेक्शन हुआ तो ही वुड स्टिल बी इलेक्टेड ऑल्दो अनकंटेस्टेड। तो मतलब ये हुआ ना, फिर आप जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ, कि एक आदमी कह दे यार ये पैनल, वो पैनल खत्म। हाँ, ये देखें, फिर ये मुझे अजीब सी बात लग रही है ना, डायरेक्शन पे लोग खड़े होते हैं, प्रॉब्ली आप देखिए, अब आपके से ताल्लुकात
किसी के अच्छे हैं, आपने एक पैनल बना लिया, तो जी अली जफर साहब बहुत जबरदस्त हैं ये वो वगैरह, आपने कहा ये भी अस्सी है जी, इलेक्शन हो गए, गौर साहब भी उन्हें दूसरा बना लिया, उन्होंने कहा हम आपस में तकसीम कर लेंगे सारे, तो वो जमहूरियत तो नहीं हुई। फिर मैं सॉरी बुरा ना माने, नहीं आपकी भाई आप भी इलेक्शन देखें, आप इलेक्शन लड़े सेनेट का, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जी, इनडायरेक्ट है, मगर फिर भी आपको एक नंबर ऑफ वोट सिक्योर करना होता है। अगर आपको एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते थे। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सो आई एक्चुअली क्या मतलब मिनिस्टर के लिए मुझे नहीं, वो आपके इतने वोट होते हैं ना सेनेटर के लिए। सर ऑन द टेक्नोक्रेट सीट्स देयर वर 2 सीट्स, अच्छा टेक्नोक्रेट का अलग वही है। लोग थे, मैं और एक तारड़ साहब, अच्छा अच्छा, आई डिड नॉट नो कि टेक्नोक्रेट का अलग है तो सिस्टम। उस पे सेक्रेटरी उन्होंने जनरल भी बाय इलेक्शन आते हैं। तो वो मैं अगर आपकी बात मानूं मैं तो आई एम ऑल्सो सॉरी मैं आपका कोई जातियात पे नहीं जानना चाह रहा था, मैं सिर्फ बात को समझने के लिए वजाहत कर रहा था। जी मगर एक बात देखें, सेक्रेटरी जनरल भी ऐसे आ गए, चेयरमैन भी ऐसे आ गए, सारा पूरा बोर्ड भी ऐसे आ गया, तो फिर तो इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। फिर ये सिलेक्शन भी मतलब क्या कहेंगे, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट अस लुक एट, आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात की एट पेज 315, अगर आ जाए तो वैसे क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन में? तो मसला क्या था? ये तो कब से वो कह रहे करो करो करो, बाप करा दो। पहले क्यों नहीं किया? आज बाबर साहब आप भी लड़ लो इलेक्शन, देख लो आप कितने मकबूल हो। पहले किया सर जून में, वो फिर खत्म हो गया। नहीं वहां भी यही उनका इशू था ना कि आप एक्चुअली नहीं करा रहे। भाई लाओ बच्चा, चलो आप खड़े हो जाओ। बात आपकी सही है कि अपने लिए आप देखिए, ये मसले आपने अपने लिए खड़े किए जी। हो सकता है अब लोग आपके मुखालिफिन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। फिर जरा ये देखिए इंटरेस्टिंगली कि लेट अस लुक एट दिस, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पेज 315 पे जरा देखिए, 314 and 315 आप ये देखेंगे। अब आप देखें सर, पेपर 2 की बात कर रहे हैं जी। So your lordship will see कि they have the election commission की ही अपील है, उसमें उन्होंने PML का लिखा हुआ है, मियां नवाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड एक्सेट्रा. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, नहीं आप पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि सर अनअपोज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एक अनअपोज यकीनन हो सकता है। अब जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पॉलिटिकल पार्टी की, शायद वो अनअपोज आ जाएं जी, मगर ये मैं कह रहा हूँ हर एक छोटा सा पोस्ट भी अनअपोज आ रहा है। बलूचिस्तान का पता नहीं वर्कर्स विंग का हेड, वो भी अनअपोज आ रहा है। वो 319 देख लीजिए, 319। अब यकीनन आप खड़े होते शायद आप अनअपोज आ जाते, मान लेते हम, क्योंकि भाई चले आप वाबस्तगी है, आप काम कर रहे हैं पार्टी का, लोगों ने कहा ठीक है बंदा सही है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल दैट 319 देखिए सर आपकी नेक्स्ट टीम, अगर देखिए हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आप कह रहे हैं, तो मैं खाली आपको इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट कर दूं, अवामी नेशनल पार्टी का इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। देखिए इसीलिए तो हमें आपका मंशूर तो बड़ा अच्छा लगा, मगर ये पैनल वाली बात शायद मुझे, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इलेक्शन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एएनपी को भी प्रॉब्लली कोई प्रॉब्लम था, या तो उनको फाइन लगाया कुछ, उनको 20,000 का फाइन लगाया जिन्होंने, और ये कहा है कि ठीक है आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज ही ऑर्डर आया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना बाद में करा लें, सिंबल आपको दे देते हैं, अभी फाइन कर लें। तो इट्स जस्ट कम आउट। अगर आपका मसला बहुत जमाने से चल रहा है जी। अच्छा सर, कमिंग देखिए, आप देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं, मगर पैसों की तो बात कर ली, वो तो है। वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे, मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है,
आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नजर से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में, मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले तो सब कहेंगे जी यस सर, वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है, हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है। तो जब अभी पब्लिक को क्या पता, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या एकदम क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not representing. The question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ। पर्सनली क्वेश्चन, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट। हमसे भी कभी चुपने वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स। द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू आर विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ डिसेंशंस एंड यू मूव ऑन फास्ट विद द केसेस, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। आई एम आर्ग्यूइंग मे बी contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. We appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, Ji, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different sort of provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है। These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. मतलब आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो। तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे, वो उस वक्त करते अकॉर्डिंग टू द पैनल। ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है इज वन पैनल, वन प्रोविंसेस पैनल, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल, ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन, किसी नहीं, एक पहले कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ।
मतलब वोट ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया हूं अभी तक पैनल। ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए, आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूं कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डिप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया। आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो वही कर रहा ही होगा, वो भी 10 लेके आएगा बंदे। नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना, लड़ेगा। वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई। आपने कहा 6 पैनल थे सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज वन पैनल, फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग। सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का, अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहिजन थी, कोहिजन नहीं, एक सोच थी, एक सोच थी। So, जो भी आप प्लस कह लें, यस ठीक है, ओके। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट। जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था, बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया। जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा फिर जाओ जी। फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक। सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100। ये आपके आइन का है, रूल्स का, not the constitution but the rules ऑफ ECP PTPTI। अच्छा वो कहाँ है, हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100। उस रूल के मुताबिक क्योंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time। ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500-525 लोग जमा हो गए थे। ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से। कौन से पार्ट में? 101 होगा, पार्ट 1, ठीक। चल आगे बढ़े, ठीक। सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया। द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है।
वो पैनल हो जाते हैं, अगर देखते हैं आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे। I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जहां मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे, इमरान मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी, मगर वो आप एलिगेशन उस सब जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूं मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे जी। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्हें बता भी दिया आपको कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। सो योर लॉर्डशिप इज, मेरा उन्होंने, आपने कहा नहीं जो टाइम दे दो, उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया, उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर ये देखें, कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना, कोई ईसीपी उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्जा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एग्री एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाजे हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। Not for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिया तस्लीम। क्या कोई और लेटर है? जो मैंने कॉपी लगाई है, ये तस्लीम नहीं की हमारे में, और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट। आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही we don't doubt that। नहीं तो पहले ही दिन अगर ये देखिए, खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें, सही है? आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी। शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब, मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ, ऑफर हुई थी, लेकिन शायद उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ, मेरी ये ऐसी ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं और बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, अवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला, दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं, वो मतलब वो चले कोई, अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए, ये भी हर पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, वो तो सब खुली
किताब है, तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है, तो कुछ नहीं गुजरा है शायद, तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी पार्टीज होती हैं उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सब ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही करने लगे ना तो अच्छी बात। बेस्ट थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह At least we are going that you way. can take credit for that. I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. देखिए, और देखिए इलेक्शन ऑन एंड ऑफ ऑल जी, आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow जी, I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. चले अच्छा, now so basically sir, coming so I have tried to ये बात समझ गए, अगला पॉइंट बताइए। Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now Speed up with my legal points. So, sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this funding also or no? No, funding is different. अच्छा, Funding is different because under Article 17(3), नहीं तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजंस हैं दोनों। 17(3) जो है सर of the election of the Constitution, वो provides कि source of fund जो है, Not to the no, we're talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read 17(3), Do they have they have jurisdiction. जी, they do. Under Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3), वो तो read with Section 210. कौन फैसला यून करेगा इस बात का? ये सर 210, these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme वो Court. अदालतों ने किया है ना, मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है। लिखा है सर, तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट में मिलेगा जाकर के। नहीं लिखा है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर। Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002, To whom? 210 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है, a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ year. से पढ़ रहे हो? To Section 210. नहीं, वो आप एक्ट से पढ़ रहे हैं ना। जी जी, तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है, तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है, लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूं सर, बिकॉज ये जो है जो 210 है, दैट कम्स डायरेक्टली नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद बट इन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन 17(2) के आपकी सोर्स ऑफ फंड्स है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं, आप ऑडिटेड अकाउंट देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता, वो एक अलग बहस है, वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं। हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं है, तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है, वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है, तफरीक नहीं हुई है। वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स
मस्ट शो। नहीं, वो तो एक दो अलग चीजें, इलेक्शन की और आइन की बात नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं फिर। Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by Election Tribunal. I refer to Section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which the election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So, पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said that even in general election, जिसकी Election Commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है, वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं। सर ये वो जैसे है उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको। वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स, बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है। नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर। द 2 है कि 202 इज इंटाइटल्ड एनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज and it talks about a political party, one parta formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. So 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको इनलिस्ट ही ना करे। फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे कैंसिल द इनलिस्टमेंट जी का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी। सर अगर मैं ये मान लिया, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रखें जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहेगा जी मैं नहीं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूं बगैर एज अ पार्टी। अब ये कहीं नहीं लिखा है इनमें कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा। ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में, यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैच्यूट में लिखा है जी, आइन में नहीं लिखा जी। तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे। ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था, ये जो आप बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं,
रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन। करेक्ट, ये था। हाँ ये बात सही है। जी। मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। Correct. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, Correct. वो बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए। वो उसको इनकार, अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं सीखता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है। तो देखिए वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। जी, तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है। नाउ 202 अगर आप देखें ये 5 तो अगर वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है। 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है सर। तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों को उनको उन्होंने उठाया, बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया आपका। सर मेरा मैं वही दिखाऊंगा भी आपको। आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल। They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow that. Inactions. Law allow नहीं करता। Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है। जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है। राइट। So now I was just I'm referring to ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है। ये ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना। तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी। टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे। अवॉइड इट, आई थिंक सो। I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is कि 154 में, for example, clearly लिखा हुआ है कि 154 section 154, 156, all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का सेक्शन कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है, whether it is specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी। Now, sir, having said that, I will like to come to my second ground, which is के under Article 17, the symbol, इसकी दो पार्ट है, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है। जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that the party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे जी। नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी। अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्सॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before.
हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे खवातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी। नहीं, आप ना जाइए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया तो दे दीजिए आप लिस्ट। नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट। नहीं, दे के ट्राई तो करें ना। नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर। आप दें, फिर वो देखिए क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें। अब आपको वकालत भी कर रहे हैं आपकी। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक mature नहीं हुई है। वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक। मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है। दूसरी चीज सर, each one if of we your can candidates. find a solution with the, if we give the solution now, that means we're deciding the issue. जी, But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी। और दूसरी चीज से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने यू कांट फील्ड द कैंडिडेट, राइट? बिकॉज अ कैंडिडेट हैज टू कम अंडर आइदर योर सिंबल और ही इज इंडिपेंडेंट अंडर एनी सिंबल। दिस इज सेक्शन 104। अगर आप यानी जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ थिंग्स कि व्हाट इज अ कॉमन सिंबल? कॉमन सिंबल मींस योर लॉर्डशिप, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती। मैं ये कहां से आपको मिल रही है बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge, नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। सेक्शन 67(3) ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों? सिर्फ बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी कैन ओनली फील्ड कैंडिडेट्स अंडर अ सिंबल। ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर, दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से। कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर, कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा। वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए। नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं। इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. Not there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard. Simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। If PTI can field candidates under their symbol, we are fine. नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है। अगर कह रहे हैं आपको इलेक्शन हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन। How do the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर? क्या? We can't fight election in the air ना सर। इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या पिछले चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है। अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो। मैंने दी एक सेकेंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हम, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं लड़ सकता हूं सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट। I can't fight PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI
candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How, where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें, मैं लड़ सकता हूँ, but not PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी. कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे, एक्स पार्टी जो भी है पार्टी, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये आप ये सारी मफरूजों पे अब जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं ये इलेक्शन आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, बट अंडर व्हाट? एज इंडिपेंडेंट ना सर. नेचुरली हाँ जी, वही है सारा. बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सर वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख किया बराबर में क्या हुआ. सर देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया है, आई थिंक नहीं, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने? मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. Sir, this is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. सर होगा ये कि लेट अस जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूं, सबको पता होगा? नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से एमएनए आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा जी. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, यानी PTI Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी, अलग मिलेगा. हाँ. अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि एमएनए है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें. मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है. इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर. आप मेरी भाषा में तो है ना, इस नहीं कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, सॉरी. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. लेटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले करे चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, So he may have to go. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen. If it is happening,
ठीक है ठीक है हाँ. So, your lordship will see that 63A capital A जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट पर अरसे से कह रही है कि दिस इज द बेन ऑफ करप्शन इन पॉलिटिक्स, लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप ही ने तो खत्म कराया उसको मजबूत किया फिर नहीं खत्म करा दिया खत्म हो गया था। नहीं आपने तो आप ही की तो पोजीशन थी मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो आप ही ने तो ये चीज खत्म की जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है सर। मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि वोट आज काउंट इस नहीं हो तरफ सकते। करूंगा कल उस तरफ चलूंगा। मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे वो कहां चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात, आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था मगर वो बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी cannot contest the election। ये मैं कह रहा हूं। इधर आए। एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं आपको दिया, आई अंडरस्टैंड। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन developed robustly by our courts। और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case। Your lordship was referring to history, so the first case on this was Maulana Madhudi's case, and your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673। इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, इट डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734 or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party। इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed। तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416। PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि accounts जो हैं वो audited accounts ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे इफेक्टिव हो रहे हैं जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह है, और जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो अभी आपको जी आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 से सुप्रीम कोर्ट 66. If your lordship look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर दें. जी नो डाउन हो गया. जी your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, We know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I am telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मतलब उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया बस. वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये आर्ग्यूमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो. मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता. करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने. देखिए उनकी जो एंजाइटी थी
इलेक्शन वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें खत्म। सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं ये। मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे। किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको आई शोड द डॉक्यूमेंट्स टू योर लॉर्डशिप कि दिस इज व्हाट आई हैव। पहला वाला जो पहला किस तारीख का था? मई जो मैं कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर में? मई में। सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे नहीं दिया। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना, वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक। कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया। अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया। सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ। अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल, ये देखें, फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो। फिर भी अब इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट। इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड। देखिए, कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं। वो सर्टिफिकेट दिया, नहीं दिया, देर से दिया, वगैरह, सिंबल, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक। दिखा दिया आप, मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात। इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया। उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं, वो डिबेटेबल है। उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही बस। इलेक्शन मैंने करा दिया। क्वेश्चन इज, नहीं देखिए, इस पे हमारी दो राय नहीं है। वी एग्री विद दीज जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स। these are important. इसमें Why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चले उसके 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं। अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देता। तो इन इफेक्ट इंपैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं। यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं। वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दे, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, आईनी बात। मेरी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17। तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे। हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 से। जी, मेरी सबमिशन ये समझ गए आपकी बात। मेरा पॉइंट बताएं ना अगला। So point हम समझ गए, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली है सर, कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not Their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising billions. आप खुद इलेक्शन अभी करा रहे हो, recently फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी। A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे। एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ। हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी। Now that's a very positive। मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो। नहीं, नॉन एसटी से नॉन एक्सिक्यूटरी, ये कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड। मेरा जजमेंट था। अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट अच्छा वो वाला 62(1)(f) ओके ओके ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके ओके, मैं समझ कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल। एक बंदे के लिए भी, तो यहां तो सर
पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party and यहाँ लिखा है कि without this, it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह यह है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366, जी सर. you wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept. And as a consequence of it, you managed to get certain results which you did not have. अब ये मैं बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit. You got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not. I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know. And you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर. Historical नहीं है तो आज की तारीख है. ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल पे. अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैंने कह रहा हूं वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं. जी तो एक तो ये होगा. देखिए अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौकिफ लिया, कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं, आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी रिव्यू में आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं
लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा, नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, यानी कैसे किया सदर ने ऑन दी एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन करा लें, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स, यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको फिर हमें शायद बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना, उनका नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी है दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में सेक्शन को, फिर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलिवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 इसका रेलिवेंट बेसिकली इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोर्ट इसलिए कर रहा हूं, I don't need to read them, is that ECP is not a court of law, and my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law, Correct. but it is a constitutional body granted certain powers directly under the constitution, and the constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो A court of law can be abolished by law. Statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं, सच अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ मजीद शूरा पार्लियामेंट। ये आपने पढ़ लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो। सर वो मेरा अब हमारा जो सिविल कोर्ट है ना, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है, अंडर आर्टिकल 175 है। आई एग्री। तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है। ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ। नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं, but So अपनी jurisdiction में they are kings. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी। वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं, मतलब कोई चीज एक्ट ईसीबी के पास कम नहीं कर सकता है। To the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे। बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, नहीं होगी, देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है, पाकिस्तान के कानून की जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर। सो यू डोंट स्पेसिफाई। हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का, भाई हम सोचे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं। सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। I'll be very short on that. My point is this only: dispute और सब
That is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ है नहीं, Your Honor, there were yes no 4 डालों में लोग आए ने कहा पूछते अभी सिचुएशन क्या है, इट्स अ वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। नहीं आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है, they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ कोर्ट को। we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. और साहब, if you want to accompany him, you can go. We are hearing आप नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा स्टोर का भाई, अभी हमने कहा ना, if they don't, I will see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरे अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं प्लीज यार प्लीज fair trial code, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं। ये तो समरी मैटर में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक proper trial करें if they have the jurisdiction, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी Sir, my next point was, a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very, very... ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का,
तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते। जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी। ये सवाल पूछा। हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो यह है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यूग्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई और एनी ऑफ द पीपल हियर। वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं। तो वहाँ पे गुजरावाला के सदर है जी, होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल। बिल्कुल उसके साथ ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरावाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये सर आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी है, फिर वो तो पीटीआई लिखा है, उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी पहले 5 मेंबर की बात कर रहा अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है, वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू डील विद इट। ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया, वो ठीक है, उनको देखे या एक चीज करना चाहिए थे दूसरी, ठीक है, तुमने दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको थोड़ा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट की, मगर दूसरी जो 2 पिटिशन है उसकी बात जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलेक्शन करा दे दिया उन्होंने जी। हमने जिसका मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहां एक फुल बेंच बना हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पिशार कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्ट ऑफ पिशार है, वो लिस्ट नहीं लेके गए, दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने, सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने खड़ा कर दिया, बट इट नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई? पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने क्या कहा? Why? Because that was a concurrent finding and it was by choice. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था, 3 of the petitioners जो थे वो वहां के ही हैं, KPK के. So परेशान के होते तो आप परेशान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें, देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के बाद वापस गए, उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. जी इट वाज, और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि इट वाज आई हु सॉट द एडजमेंट। आई हैड एक्चुअली गॉन फ्रॉम पेशावर टू लाहौर टू अटेंड दोस केसेस, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया, ठीक। सो पेंडिंग तो है ना, पेंडिंग है, वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट
because it is becoming infectious. But that जब लगता है तो we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक But just telling you, according to Mr. Mahdum Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था, नहीं वो other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP I think I don't know why. बताता हूँ आपको, 11712023, which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें if my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कल अदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Actually, it could not be related to this election, nor these allegations, because this election took place subsequent. Correct. But the chain goes back to the same. So chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop you from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded, candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Nawaz साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है, रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लड़ाई नहीं है शायद नंबर देख। आगे सर, अब आगे आप जी क्वेश्चन. So I will leave I will not, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है. But if it's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. He is not conceding. He is contesting. He is saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना, ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when 2 courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one that I. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. ये कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक करने फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी.
How much longer time? So I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issue is. मैं आपको कुछ इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट 6 घंटा करें क्या करें मैं तो trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor, as I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD, से ये वाला तो खत्म कर लेना 68 मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये आप ना पढ़े सर बेशक फिर छोड़ दें मैं आपको रेलिवेंट बात है तो वो पढ़ लेना ठीक है सर मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें कौन सी PLD 2009 CLD 1498 ये LPG एसोसिएशन केस है ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है दैट आल्सो योर लॉर्डशिप विल सी बट आई जस्ट वांटेड टू रीड वन लाइन तो ये LPG केस है फेमस उसको फॉलो किया जाता है किस पॉइंट पे ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे वो और आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि दैट डज नॉट आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशियल लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूँ इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं ठीक to me each high court is a supreme court of that province ठीक now if there are two high courts with concurrent jurisdiction both will have and I agree with you okay number two if I have filed a case if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference a second case is filed in the second high court propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe सपोज एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी ठीक है आपको स्टे चाहिए जी अब ये इलेक्शन में एक आम बात कर रहे हैं जी उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई कोई कस्टम ड्यूटी लग गई कुछ भी हो गई तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ वहां मैं स्टे ले लेता हूँ ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल तो सिर्फ देखें या तो आप उसको डिसमिस करवाएं विड्रॉ करवाएं जो भी आई डोंट नो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते सर बिल्कुल सही अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग एक शख्स ने वही लेवी सामने चैलेंज कर ली उसने सिंध में कर ली तीसरे ने लाहौर में कर ली मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम cause of action. It is very straight line, very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर election तो इस तरह हर election होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं reject same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions. On the same issue, yes. But on different cause of actions. Yes. Right? And that would be a conflict ultimately in But you can't go to Peshawar from supposing I'm Peshawar से लड़ा हूँ मैं, तो I'll go there. अगर उसके सूबे में आता है तो इधर जाएगा. तो territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा है? ECP का
एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं सर। या उनका एलिगेशन होता कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है। मगर अगर सपोज ईसीपी कल आपको नोटिस ही आता, बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us, sir. That party है sir इस केस में पेशावर वाले. तो issue है। He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. जी. Après-vous, क्या है फ्रेंच में क्या? Après-vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed as a. चलिए खैर आपने ये बात हम समझ गए, मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था। चलिए मैं समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक जी. Now, sir, moving on. 645 नहीं, हम अपना काम करें, आप बताएं जी। बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था, आई कैन मल्टीटास्क। वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है। जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है। पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है। नहीं, वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे। नहीं, आप तो हैं ना सर, आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें। So ये तो I think is a very I mean I am very. ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे जी। उसमें पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not party. Imran Khan is not party here. नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, या तो से he has got nothing to do with the party. He is not party here in this second edition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो, हम लिस्ट पे जाएंगे। चलें ठीक है। तो लिस्ट पे वर्सेस इलेक्शन वो कमीशन। तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, अपने पार्टीज आर डिफरेंट। जी। We have to see the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला। आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है, पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ। हाँ, तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फेक्शियस हो गई, आपने कहा नहीं। जी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि फिर आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फेक्शियस हो गई है। फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी, देखिए मेरा देखिए आप ये पार्ट सुन लेते हैं 657 पे। When confronted with the query that since inter-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 39/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that the instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है, ये तो आपकी अपनी इस्तदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया, वही इलेक्शन का इशू है। फिर आप चले गए पेशावर। मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज उमर अयूब्स एंड ऑल दीज पीपल हु वेंट टू पेशावर, अगेंस्ट whom ECP and the 14 people
in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये अच्छा, और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते. तो फिर लाहौर ही जाते हैं ना, लाहौर के पास क्या जुरिस्डिक्शन थी या नहीं ये बताएं. लाहौर के पास जुरिस्डिक्शन सर मेरे लिहाज से बिल्कुल थी. तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते हैं जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं कंकरेंट जुरिस्डिक्शन थी. हाँ? कंकरेंट जुरिस्डिक्शन थी. नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिस्डिक्शन, ये बात है. ये मुझे देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं. एक जब आप उधर आप can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But So it's I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. Ji. The Lahore High Court 5 judges say. Ji. So the election that was held by you was correct. ये तोड़ गया इलेक्शन. नहीं, अब तो सर देखें, नहीं देखिए, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन if I persist, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला if I persist with the case, and this आपसे thing नहीं है. happens. अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. जी. कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सबके मुताबिक था. ठीक है, उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की. उधर इलेक्शन सही हो गया तो वो लोग भी इफेक्टेड होंगे. या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं. वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दे. देखिए एक सेकंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें. आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो बिल्कुल साहब फरमा रहे हैं ना, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not. I will not be at all. That would be a very great question of law. So that is why I'm saying that is a totally different. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1). You accepted the point of view. नहीं, you challenged it. तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया. जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया. नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या, तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे. अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी. फिर So that is what I'm saying. आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम नहीं. देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, लोगों का कुछ पता नहीं होता है. आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का. बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाज़ साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा. इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटते, वो कहते कि मैं नहीं. चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है. पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल. यू कांट हैव दी इलेक्शन फॉर अ पैनल. तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा. That's right. If he doesn't, then he doesn't. okay. चलिए, so that is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोले? Political parties, see, 175 almost. And out of them, not a single one, the intra-party elections have been probed into like this.
बल्कि चैलेंज नहीं हुए इसमें। चले आप ये कैसे नहीं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए ही नहीं है, यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई, प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें जिस तरीके से भी कराने, करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये। आप चले कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज एंटिटी। इनका एक अपना सर जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चले वो आप नहीं पूछ रहे नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताए ना। वो रिपोर्टेड ये 853 पे आ जाए सर। कौन सी इसी पेपर बुक में उनकी पेज में लगाया, पेपर बुक में मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था। तो हमें आपने कुछ नहीं दिए बुक में अभी है। मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा है, बता दीजिए। इन व्यू ऑफ सच प्रोविजंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आप in view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के? कोई चीज नहीं इसका। चेंज तो 2015 वगैरह में तो बल्कि फिगर डाल दिया ना उन्होंने। ये तो आपसे हम पूछें, बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी पॉलिटिकल पार्टी जो सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर, ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी से पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। सो ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स में वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्फ्लिक्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? कर देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan, filed by Mr. Mumtaz Akhtar's Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and abhorrent acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahraz and Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का
का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया है जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसके किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी जी, इसके तहत हुआ जी उसके तहत हुआ। It is. Then I can't follow this. जी, so your lordship, my position is that the election commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आके नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हाँ हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। थोड़ा ये भी हुई है सर। हाँ, ये भी आपस में झगड़ा। मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आगे, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए। उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेइंग के whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। यहाँ तो वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है। पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो कोई एविडेंस लेके आए, but would the proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. Nor can they establish the elections were not held. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटिशन ने इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन, क्यों चले गए? तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है। हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स में बैठे रहे, फिर कोई आया नहीं। बट आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। लॉर्डशिप, नेक्स्ट पॉइंट where's the attorney? नहीं कुछ ना क्या attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. Okay, एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ठीक? जी, Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं। मिस्टर उमर अयूब इज नॉट अ पार्टी सेक्रेटरी। मिस्टर असद उमर जो है सर, वो एक्चुअली ही वाज डिटेन्ड, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but it was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी, क्या रीजन दिया था? ठीक है, okay. So he disclosed the reason, and point being that he resigned. Now, if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign किया, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post, and then Mr. Umar Ayub Khan Did he resign as a member of the party, the office holder of the party? he as an office holder.
बाकी सब वो भी रिजाइन कर पार्टी छोड़ दी पार्टी भी छोड़ दी बाद में छोड़ I've been informed that he's left the party now but so the point being said star of your party जी star थे ना yes he was I think and I mean जो भी उनको मजबूरी होगी I don't want to go into that उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाजे तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं it is हाँ it is correct that फिर उन्होंने तो रीजन दिया है जी उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ठीक है फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ May 9th. उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए बट ये इसीलिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन. जी तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर जस्ट बाय व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे. हम दूसरी तरह से देख रहे हैं जी व्हाई शुड द अदर्स लीव एंड ही स्टे. ही मीन्स क्या नाम है इनका, असद उमर असद उमर. why should he not leave Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है stayed there. नहीं but he opted out he opted out he opted out अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं? सर बिकॉज आप देखें जो हिस्ट्री देखें पहले बाकी पार्टी से कोई मसले कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो. कौन सी chosen पार्टी है उस पर डिपेंड करता है अगर आपकी मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है. ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो. हो सकता है बहुत खुश होंगे इलेक्शन कराया खुद ही इन्होंने इलेक्शन अपने आप को मसले खड़े कर रहे. फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको कुछ मतलब इलेक्शन कराए सर. सो सर टू सम अप कीपिंग यू द माइंड and all that. So basically, I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया है. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So मैं अब सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट देते हैं ट्रायल कोर्ट. दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenged like this. वो आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टी स्कूल ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिसने ने आगाज किया उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. उसमें पढ़ी, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले हैं. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप सर देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है आपका क्या नहीं पेज था बताएं. 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए मैं वो देखना चाह रहा था. जो डायरेक्टेड टू रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डेंस रेस्टिंग ऑन द सब्जेक्ट. टाइटल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. अटेंशन इज ड्रॉन सो एंड सो कंडक्ट. सर अगर ना करूं मैं, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ना नहीं करूंगा अगर इलेक्शन तो फिर तो मुझे आप पूछ लें
कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, बट अगर मैं करता हूं और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपने किया तो है लेकिन हम इसमें से ये गलती निकालते हैं, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम वो इज। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ना जी चले, अगर वो ये कहते हैं तो मैं उस पावर की बात कर रहा हूं कि ये कहां से उनके पास पावर आ रही है कि वो इतनी निटी-ग्रिटी में जाएं कि एक ट्रिब्यूनल बन जाए। एंड आई थिंक द ऑनरेबल लॉर्ड लीडरशिप विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मैंने ना कि एक है मैंने इलेक्शन किया ही नहीं सिरे से और मैं धनधनाता फिर रहा हूं कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना। चले उस सेंस में तो आपको समझ आती है कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने क्यों नहीं कराया, बट मैंने करा लिया। आप कहते हैं कि मेरी ये गलती हुई, ये गलतियां हुई 2, 3, 4, 10, ये कहां से पावर आ रही है मैडम टू द इलेक्शन कमीशन के वो ये गलतियों में इस तरह प्रूव करे जिस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिया हुआ इलेक्शन एक्ट में। दिस इज वेयर आई थिंक द एंटायर केस फॉल्स डाउन। अब लास्ट में मैं दिखाता हूं फिर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जजमेंट एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्शन ठीक हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। हमें देखने की जरूरत यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिसडिक्शन थी कि नहीं। फिर ये कौन पढ़ दीजिए, करेगा? जी पढ़ लेते हैं सर। So, Who will check these irregularities? अगर कुछ होती है तो कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में? वही जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहे हैं अपने ऑर्डर में, उसने कहा है कि आप जाएं सिविल कोर्ट में, ये मेंबर्स का इशू है, हमें क्यों हर पार्टी का इन्वॉल्व करें, वरना होगा क्या जी कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, पुराने ऑर्डर की बात करें 2009 मैं जवाब दे दूं, 175 पॉलिटिकल पार्टीज में हर रोज झगड़े होंगे, हर रोज वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, एक क्लेम करेगा जी मेरा ये वोट नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, तो वो तो एक सुपरवाइजरी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी। चलिए जफर साहब, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। एक होता है डिटेलिंग, किसको कितने वोट पड़े, फला फला। आप कल को कह दें जी गौर साहब को 1 लाख पड़े वोट, ठीक है, बाबर साहब को 10,000 पड़े, ये तो चले आपकी बात मान ली, इलेक्शन कमिश्नर ने सर्टिफाई कर दिया। मगर यहाँ जरा सा थोड़ा सा केस फर्क है। उनका कहना है इलेक्शन हुए ही नहीं है, जो जिसको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये बेसिक तकाजे पूरा नहीं कर रहे इलेक्शंस के, ये फर्क है। निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे कि जी नाम अपना अगर ये कह रहे होते, शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो गया, ये लॉर्डशिप चले, अगर ये इलेक्शन कमीशन ये कह रही होती तो फिर भी मैं आपके सामने वो बहस करता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही। इलेक्शन कमीशन तो कहती है कि आपने इलेक्शन करा लिए लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत है। तो ये बहुत हाई कोर्ट ने कहा है ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ लॉ। अब ये अगर आप कहे ना वायरीज आपके सामने है, ना आप उसको स्ट्राइक डाउन कर पैराग्राफ 25 इंटरप्रिटेशन इज अब्सर्ड, आई फील पेज 20 पेज भी 25 है, पैरा भी 25 है और ये कंक्लूजन है। मैं पैरा 10 से शुरू करता हूं सर। The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it we is agree 100%, we agree with this. ये तो आपके खिलाफ जा रही है बात। doesn't matter. Doesn't matter. I am fine with that. नहीं कर सकते। आगे जाके नहीं, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that आप वो इंटरप्रेट करेंगे क्लॉज की, मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन दूं। आपकी पिटीशन कहाँ थी? आप वो इस तरह इंटरप्रेट करेंगे आर्टिकल इसको जो कि आर्टिकल 17 के कॉन्सोनेंस में है। And your lordship is not going to deny a symbol to a political party कि वो dysfunctional हो जाए। Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course, we don't want to do any such thing. Sir, 11 पढ़ दूं जी आप। Jurisdiction of this court and maintainability, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है शायद। I will leave that. हमने पढ़ तो लिया है, अगर आप कोई खास बात बताना चाहें बता दें। इसमें छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर। ये
अब हम आ जाते हैं, एक चीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं की जो आपने जिसकी पेज 14। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन हुए आपके, वो कहाँ कहा इन्होंने ऑर्डर में? वो डील नहीं हुआ है ना, वो एस्पेक्ट ही डील नहीं है ऑर्डर में कि वो आपके इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि दिस इज अ quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say कि it is a void order. So election commission के पास पावर ही नहीं है कि वो मेरी इंटर पार्टी इलेक्शंस को देखे। Now let us look at 15 para. Before फिर आपको अगर ये पावर ही नहीं तो आपको अपनी पिटिशन में ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, आप इलेक्शन मेरे हो गए, फिर ना बात करते, वो सिंबल नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप सिंबल बात करते ना कि मुझे सिंबल चाहिए, आपने नहीं कहा एंड में। आप पढ़िए अपनी इलेक्शन, आपकी पिटिशन पेज 33 पे आइए। मैं जरा ये पढ़ लूं ऑर्डर से, मैं आप एक सेकंड ये पढ़ रहे हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, लेट मी फिनिश दिस पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Mohammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the 18 पे आ जाते हैं, 18 पे आ जाते हैं, ठीक है, 18 पे। I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. ये आप दोबारा पढ़िए, ये जो आपने भी पढ़ा ना, बिल्कुल यही कह रही है। Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. हाँ, अगला जुमला आपने पढ़ा। However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. बिजली बात नहीं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहे हैं। Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal, or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of ये सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें, jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है। जी मैं आपको पढ़ रहा हूँ सर। नहीं बता देना कहाँ लिखा है। नहीं, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना। जी पढ़ रहा हूँ सर। A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal, or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority, or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. The existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. यहाँ नीचे ये डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके, वो आप कह रहे हैं कि jurisdictional fact है तो अथॉरिटी कर सकता है। If it exists, if it is तो उन्होंने आपको शोकॉज देके एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर। फिर वो तो अगर आप नहीं, मैं सिर्फ जजमेंट किया, देखें जजमेंट के जजमेंट पहले पैराग्राफ है जो आपस में कॉन्ट्ररी है टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस। with respect to the डिस्ट्रक्टिव है वो, with respect to कर नहीं सकते, कह रहे दूसरी तरफ कहने कर सकते हैं। I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying, आप पढ़ लीजिए, ये कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, once the authority has jurisdiction in the matter,
on existence of ये तो jurisdiction general fact. बातें हो रही है ना, कोई It can specific बात। decide the fact in issue or adjudicative fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicative fact would not make the decision of the authority without jurisdiction in vulnerable provided ये तो और exception. आपके अगेंस्ट हो गया ये। चलिए अगेंस्ट नहीं वैसे एक law है। A wrong decision of fact in issue or an adjudicative fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है, आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है। I think there's no तजाद in saying frankly. ये बता This is the law. और ये तो law कह रहे हैं। चलिए ये law बता रहे हैं। आपने तो नहीं लिखा, खैर यू कांट बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं बट law भी बता रहे हैं। आगे चलें। ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं। ये पढ़ते हैं सिर्फ। ये पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें, वो वाला जुमला बता दें कि ये Having discussed the general jurisdiction of the ECP and refer to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of an political party. It is envisaged by section आप देखें वो इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता रहे ये पढ़ने से मेरा ख्याल है ये चढ़ा जाए शख्स, ये जजमेंट पे चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप देख लें ना, आगे पीछे करना नहीं है। बिल्कुल देखें आप। हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें, अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, हमें 1-2-3 सवाल हैं। जी पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है या तो वही आर्गुमेंट रखे जो पहले ईसीपी ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है, ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सरसरी तौर पे देखा है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा। जी ये पढ़ने के बाद से नहीं आप पूछ लें, नहीं हम आपको आप देखें, आप खड़े होके पढ़ रहे हैं, हम मखदूम साहब को जो सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा फिर आप नोट कर लेता हूँ सर। जी अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे। जी पेपर बुक पे। जी ठीक है जी, इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी that in the impugned order, ये वाला जी थैंक यू, that in the impugned order ECP has accepted as a fact that आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे कि हमारे लीडर ये जो वो अब क्या करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में, ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे। नहीं ठीक है, तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे, अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें इसको दे या फिर वापस भी देंगे। ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुनिए, ठीक है, एज योर कॉल। मैं जस्ट कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ सर, पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज में पढ़ लें सर। आप ये पढ़ने में पहले तो पढ़ लीजिएगा। नहीं आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें। 25 पढ़ लें। पूछना चाह रहा हूँ किसका जिक्र कर। The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम अग्री करते हैं। आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये जंप हुआ जरा, It cannot be मेरा भी केस ये है on the basis of on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए because virus तो under challenge है ही नहीं। अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation आगे चलें 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act
or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है. अभी सुनिए एक मिनट, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया जी. पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी. जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका. तो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो. तो 215 में तो पूरा केस चला आपका. 215 में गलत चला दिया ना सर. इन्होंने गलत चलाया. इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे. मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is We are only. not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है. 215 में तो पूरा केस इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं. 19 ऑनर्स पढ़ लेते हैं. 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो. जी. तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको. सर जहां तो फिर तो मैं बिल्कुल आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स. My first point was. Yeah, so what we do is 215 जो था section. एक second. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back. आधा घंटा? आधे घंटे में ठीक है सर. ठीक है. Thank you. Additional submissions. We coming back. Okay.
Has the IG come? We've sent for the IG. Okay, that's good. Is he here? He may be coming. G. G, do you have the answers that we had asked? I do, but very briefly, I was just going to read the paras, finish the judgment, and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? एक reference है to a case at page 20 के page 20 पे जो para 19 कोट किया हुआ है उसकी last 4-5 lines पढ़ता हूँ. Page 20 of the judgment. अच्छा, ये जो interim judgment की बात करें. जी. I'll leave the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? Yes, sir. एक case quote किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. The pura paragraph, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. 1999 SCMR 1921 we are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, okay. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. G. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process.
allocation of symbol to a political party. एक second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Chale, anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to I must keep reminding you. Ji, kitna waqt ho? So, if I say 10 minutes, is that fine? 10 hoga. 10 hoga, sir. 10 of my talking. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना वो हम अंडरलाइन कर लें जी लाइन 5 पढ़ लिया जी लाइन 5 the penal clause I subsection 5 of section 215 envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of page so and so. The combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to a petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. ठीक है तो इससे तो कोई तो राय नहीं है फिर वो quotations आ गई we've already read the judgments or referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. G. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? G. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये मैनिफेस्टो की बात नहीं तो फिर ये क्या डेक्लेरेटरी डिक्री वो जजमेंट दे रहे कि आपने व्हाटएवर कह दिया अपने मैनिफेस्टो में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है होना चाहिए सर बिकॉज मैनिफेस्टोज हमारी पॉलिटिकल होना चाहिए इट्स लाइक अ विश ना कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट सपोज कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए फॉर इंस्टेंस आप मैनिफेस्टो में लिख दें कोर्ट कांट डायरेक्ट यू पार्लियामेंट कैन चेंज लॉज दे वांट टू करेक्ट बिल्कुल सही एनी अनलॉफुल ऑर्डर which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी and then the simple conclusion that the jurisdiction is not there. So I would support this judgment. And आखिरी बात जो मैं करूंगा सर because I have to conclude in 10 The only thing it may except if I can speak on your behalf except calling a provision of law absurd
जी, As a parliamentarian, you would not want that to. that can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी। अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट के एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया। जस्ट द कॉन्सेप्ट, एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट, उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की, सो ही वाज गोइंग टू बी अवे। तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल। तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन। So one of the grounds taken was कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया is not the advocate general, he is somebody else. तो कोर्ट ने कहा कि show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. तो अगर वो prejudice नहीं है तो there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड। Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़े कैसे? जी, वो ये कहते हैं, उनका तो और भी बुनियादी। लेकिन मेरा भी, मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था। None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या, क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना, कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते। That point is conceded. But nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ। और ये जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स मैं कोट करना चाहूंगा ये लॉर्डशिप में से पॉइंट्स बता दें किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डी फैक्टो, समथिंग हैपनिंग डी फैक्टो, कि अपॉइंटमेंट्स गलत भी हों तो जो ऑर्डर्स पास हो गए हों या एक्शंस हो गए हों वो नलिफाई नहीं होते। ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना जी। हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूंगी, इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहां जजेस अपॉइंट गलत हो जाए और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है। जी जी, अली वो वाला जो ज्यादा जजेस के वो जी जी, वो फरजंद केस, फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन केस, वो तो सेटल प्रिंसिपल है। तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल, वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस। तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना, आई हैव नो इशू। अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू, ठीक चलें, अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम चिल, बेसिकली खत्म आई एम खत्म जी। I hope you're not खत्म। अच्छा, वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाए उनको। तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is, whatever Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप, ठीक है? और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? तो this is very serious
do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. You know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौकफ है, जैसे आपने. नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए. लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है. क्यों? और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स. कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, सो दे वर रिटर्न्ड. नो, मगर वो कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, ही मस्ट हैव दैट. कौन सा थाना है? कोसार. आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए. और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, तो आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ. ठीक है, this is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection. ठीक है, since you not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी. आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ. ठीक है लॉर्ड. इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए. आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए. एंड इफ गौर साहब इज नॉट सेटिस्फाइड, देन Hamid Khan साहब, you can convey the thing or he can directly, so as it would be better अगर आप करने. ठीक है, तो ठीक. लॉर्डशिप, anything else गौर साहब? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, प्लीज go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. लॉर्डशिप. Thank you very much for coming into this. No, actually I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for, I mean, I don't know what's happening. So I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General. Appreciate it, sir. I mean, no point telling the AG he won't know anything. Right. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. मखदूम अली खान, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ, you only represent one नंबर के लिए बुला लेना. अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं. अच्छा, सॉरी, आप, अच्छा, you wanted to add something, जी. The short submissions, but one thing for which I'm extremely grateful that Your Lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, साहब थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. केस को कुछ, we have not taken any, मतलब let's चलिए अब केस पे बात. जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं. केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था. The 2 places, इस्लामाबाद. साहब, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. ऐसे बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने. उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप तक पहुंचाऊं. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. And they are the center. खान साहब, आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर आपकी बात ये बात है, तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराए, इनको बताए नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. इसलिए अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना. अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते, हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? तो उन्होंने जवाब में लिख दिया, भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहां सिक्योरिटी देते हैं. तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं. नहीं, मैंने कहा जब आपने जो बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे. जी चलिए. We still have a duty to चलिए, let's proceed with the notice to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. Why did we choose the Peshawar High Court?
दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी जी because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब, केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना। अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में। सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स भी हैं, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है। मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनके साथ डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मगर ये देखें, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई, 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट, लाहौर विच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच। तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए, इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात। सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच। वो वाला दूसरा फैज साहब जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है। नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है। कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the High Court, Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे इस स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए we have all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional / statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I am relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं,
when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under, they've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see, 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But suppose someone challenges a judgment of the higher court. Yes. And he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not So be, if you got the party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? it may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and separate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199 because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया. If another party aggrieved can come home, ECB can't come. जी अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि आई डोंट लाइक दिस मेंबर्स फेस, आई रिमूव हिम. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस These are very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें दो दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी. वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का, वो जी सर. हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना चाहिए. अच्छा. तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 586. ये वही वाला है, कल वाला. वही दो जज. हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास? इसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो कि आपके इधर से आगे आप तो अगली पार्टी हो नहीं सकती. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूं कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे देते. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो फुल मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी से नए नए वाले जो कह रहे हैं ये सब कितने इसके जो कह रहे थे ना ये बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस. हाँ तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन. तो इससे आप इस केस से क्या ताल्लुक बनता है? इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन एज आई सी हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता.
Another 5 minutes I will provide. It's no जी सर पढ़े देता हूँ The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined the Civil Service Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning whereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. The registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. Ye kya baat hui? No, defend before the court, but you cannot be appellant because logic nahi samajh institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is not for the parties. अगर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया आपने चैलेंज भी नहीं किया तो मतलब ये नहीं हम ऐसा सिचुएशन सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस देखें आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटीशन ही नहीं फाइल कर सकते थे सर देखिए आपको किसने राइट दिया पिटीशन मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212 देयर डिसीजन वाज बीइंग चैलेंज्ड before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held no, we can't do that because we are not there to. चलिए आपका point मैंने सुन तो लिया मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है आपने तो फैसला कर लिया अब आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो बिल्कुल जी ठीक है एग्जैक्टली अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी बिफोर द 18th अमेंडमेंट before the 18th amendment let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you
हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर पे सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के. तो पढ़ ली 17th prior to 2010 before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना जी वही अब ये खत्म हो गई है. every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted under the 18th but it was brought back by 207 Elections Act. Yes, अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP for the purpose of the intra-party election is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हम साहब उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का. वो एक उनके सेक्शंस में है. तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए. देखिए वो एक और एस्पेक्ट है बिल्कुल, and very ably argued by Mr. Ali Zafar, कि it has no jurisdiction. But the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. Lordship, kindly, that's Article 219. So may I read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, आप पॉइंट बताएं. This is the next point is
that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन लिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura, Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of Parliament as a statutory body, it is performing that function. So, under Article 219, any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ईसीपी की कदर नहीं कर रहे हैं. Proviso? नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. Absolutely. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं. सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर, इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. जी. Yes, sir. 220 is not with regard to functions, with regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार है. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाए घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चले आप दूसरा पॉइंट बताएं ना. ये मुझे I can't, ये आप कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना. So that's it. Now next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards?
I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं Pages जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं partly argued that. Yes, अपनी बसंगरी को ले जाए। मैं आपके जुरिडिक्शन में जा रहा हूँ आप अपने दूर में partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में कौन से नंबर में लिया है इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की position में there we have clearly taken the position वो of बताए ना वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका grounds before the Peshawar High Court. तो इसी की नहीं लेना है, उन्होंने थोड़ी लेना है। हाँ वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है हो सकता है कहीं लिया मुझे नजर नहीं आ रहा है तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया और ना हाई कोर्ट ने उसमें कोई फाइंडिंग दी नहीं, कई चीजें जो हैं सर दिस इज ग्राउंड W on page 49 page 49 ग्राउंड W आप पढ़ लें और of the first paper book 1 may I read it out that it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना आपने कोई देखें फिर आपको नहीं एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ना जी जी फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी परसों हमने केस चलाया एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी ठीक है उसका वजूद ही खत्म कर दिया और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं सर वो अपनी जगह लेकिन ये आप कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है तो कैसे आप कह सकते हैं मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटीशनर ने लगाया है उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या खुद नोटिस ले लें सर बात ये है ये ईसीपी पिक एंड चूज कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना कहने से लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे बिल्कुल सही नहीं लिया आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको
तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराया, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है, अभी देखिए इलेक्शन, ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से वहां से उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूद्दीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 वो कौन से इलेक्शन से, ये इंटर पार्टी इलेक्शन ये कब की बात है वो, ये 2012-13। तो देखिए अब ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना, कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूद्दीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. यही contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। ईसीपी की वो नहीं होती है, पार्टी means the people. Very rightly. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम, इन माई व्यू, इट्स नॉट पर्सनल। कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास, द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं, और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215, 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो। तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी, वो जो 2017 के लॉ के तो इसका 2017 देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी, क्या करेंगे, खत्म हो गया है, तुषार हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर पार्टी इज। वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारी दरवाजे तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। ग्रीवेंस पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर के जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी की, वो कहता थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा, ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें पाकिस्तान में, क्यों इलेक्शन? अगर ये बात ये जो पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है
basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की. देन इन फ्यूचर नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी सब्जेक्ट टू द इंटर पार्टी इलेक्शन. Now it says, and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है. जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी है, कोई नई बात करें ना जी. अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया. ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स. जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज. ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी. ये देखिए, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें. देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन किया है कि ये क्या करें हम? उनको दे दिया, राइटली सो. देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा मैं हमारे साथ क्यों गलत. हम एक और बात कर लेते हैं जी. मर्डर इज अ क्राइम. मर्डर इज अ क्राइम जी. एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहता है मैं नहीं रजिस्टर करता हूं एफआईआर. एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फौरन रजिस्टर कर लेता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे. कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी. देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहें ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है. So I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है. मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है. लेकिन मैं अर्ज करूं, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agree. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. एक मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, एएनपी कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? वो नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी, इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी एएनपी कर लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंस. मगर देखिए, आपके अपने कॉन्सिक्वेंस, आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देख रहे हैं सेटअप चेंज हो गया, या पीडीएम आ गए, या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त में टाइम दे दें. हाँ ठीक, तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है. कुछ अब आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. वो अगर एक ऑर्डर पास किया, डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. मगर अभी पूछेंगे लीगल बात करें ना. आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं, मैं तो फिर
exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all We parties got that. equally. वो हमने we got it. आगे बढ़ते हैं. So ये मेरा खबर क्यों पॉइंट नोट लिख लिया है, discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. As a matter of interest, are you contesting elections this time? Yes, election लड़ रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं? हाँ. नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात है, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात कर रहा. Now, sir, next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections, and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B. 1A. तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इंप्रीम जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर चुका. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It says that in law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ye hai there. I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. Isme clause 2.
declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration. Not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my... अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. ना ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province. They'll say we don't do this either. We don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say, I thought there's no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we're not doing any of these things. We are doing election. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But देखिए ना, declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है इसका. How does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... Their objection, they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is the ownership impression. Nothing more I have to say about it. Sir, खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been... ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो. आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं नहीं कह रहे ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज. जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ भाई. राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू कोई डिनाई नहीं कर रहा है. आपका राइट है, वो कोई डिजाइन नहीं कर रहा है. वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट है. राइट तो अभी है ना कि अगर he was entitled to that, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं. यही तो बात है असल. Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP, the time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship was saying that I should conclude early so that... Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया है. देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody, making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that interference and order
passed by the Election Commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This may be a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. Sir, founding member who turns against his party, तो क्या वो party देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौके गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी जो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रही, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं आप कहते हैं नहीं केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, तो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के. देखिए एक आदमी और लीगली नो, आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. तो वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलिए तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट अस. Yes, the party will defend, but let us challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against this party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फला पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब
हैं पार्टी में, छोड़ गए थे। मैं मिराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था। He was a founding member of PPP, but he had differences in 1970. तो आपकी पार्टी में आ गए, he left. आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना, अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्यों एक तो इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है, इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, हम ये बात बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब भी वर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, तो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें। 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, हम कब मना कर रहे हैं। अगर एक तरीकेकार है निकाल लीजिए, उसके तहत सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको, क्यों छोड़ें हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled. दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। वो तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आप ये कहने से बस काफी है। तो काफी है, पार्टी से नहीं, अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging my? No, you should show me. No, 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court. पार्टी हो फिर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ, तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा। ये चलिए खैर आगे बढ़े, we have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब फिर बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships for the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस और 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो, आज बाय दिस एक्ट ऑफ एसीपी दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट, व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट। खान साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को, इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखे ना, हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब, तो ठीक है लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें। पढ़ने मगर टाइम की बात है। फिर 2A, the principles and provisions set out in the objective resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है। सर इसमें ये कहा है wherein the state wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी परहैप्स बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसको इलेक्शन से बाहर कर देंगे तो फिर उस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत सारे फारिग हो गए। नतीजा क्या है ऐसे इलेक्शन का जिसमें एक पॉपुलर पार्टी विद फॉलोइंग is deprived
of contesting the election, participating in the election, it virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even ये बात मिलियन वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना जी, ये हमने noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ, sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications. And Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters, and all the political parties will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and these consequences of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Mauritius Museum's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं, कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना उन्होंने कहा कि अदर इन पर्सन आई एम ओनली रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्ड नंबर हुआ था अदर्स इन पर्सन. नेचुरली वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकेंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं ये 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सुबह इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से. MPA तो स्वाभिमान से. स्वाभिमान से. हाँ जी. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है सेंट्रल सेक्रेटरी. हम नहीं, आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए.
मैं गया था, मैं उधर आपस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाहिए। हमसे पहले भी उधर लोग बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाहते। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं पीटीआई में 2006। महमूद अहमद खान जी जी, मैं 2006 से पीटीआई में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहां मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होकर केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद पीटीआई इस्लामाबाद जी ऑफिस एज व्हाट। मेरा थोड़ा सा आई हैव सबमिटेड। आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर। तो आप किस पार्टी में हैं? आप किस पार्टी में हैं आप? पीटीआई में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज पीटीआई असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात यह थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा। लेकिन देयर वाज नो इंफॉर्मेशन। पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं। तो इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उनका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। वी वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पार्टी, एंड इफ देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पार्टी देयर विल बी नो डेमोक्रेसी इन द कंट्री। को बता दें। ठीक है, वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज द वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी जी। 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। देन आफ्टरवर्ड, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वॉज डाइड 2 years बैक। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब ही वॉज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ। और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया,
और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे डीर अपर डीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी, पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले, वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज। G8 में कोई घर है या नो नो, इट्स अ बिल्डिंग बनाई, नो अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है, ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात यह है कि मुझे नेमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चले अब और कौन साहब है? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक। जी, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी थी, उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? पार्टी आपका 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी, तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाव में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अब अपने लोकल एरिया में हमने बात नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और ये कम दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहां? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया के दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए, जिसमें लोग PTI में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चेक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना UC काशी से, टोबा टेक सिंह से। UC काशी टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था PTI का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में PTI की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन
कि आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर, बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, प्रिजाइडिंग, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन, यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये तो बट 1 सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और रह गया? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक्सिंग में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलिए ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on Very behalf of the short. board? Very short. I'll be as brief as I can. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court through the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to जी मिला ये 171 जी। As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 are no longer with us. With us, meaning they've passed away. अच्छा। Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active In the party? I believe he's still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, ji. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Which page? What is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, why are you showing its to relevance? demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूं, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है? जी बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले लिए, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले, ये बात की है जी। आई डू नॉट हैव द ट्रैक लाइन ऑफ द
constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात? जी, नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58. जी, ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त. रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट. जी, इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल. इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई करें. और इसके आगे मैं, आपका नाम कहाँ? जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर. Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज. पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी. ये आइन जो है 99 में आया. और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction of that. ठीक है, तो ये 61 हो गया. और कोई बात? जी, और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है, पेज 63 पे. चले, खैर वो तो अलग बात है. और उससे जो आखिरी किसको शो कॉज दिया है? दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान. क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice. और on page 65, I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any. मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 65. ये let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I show cause notice का क्या बना? I have जो public knowledge है जी खान साहब मेरे जी. उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं, ये वो जजमेंट हैं. एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं. पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी. इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब. सिर्फ वो जुमला बता दें. जी मैं उस पर, इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी. इसलिए ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का, जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई, वहां पर भी ये कहा कि मेंबर नहीं है, इसकी शिकायत मत वसूल करो. तो ये वी वेंट टू द होल मेंबरशिप स्टोरी मल्टीपल टाइम्स एंड हियर where is it held that you're a member? जी इन पैराग्राफ 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 पेज बताइए. page 71
तो ये 10 से शुरू होता है जी, 11 में भी इसका डिस्कशन है, और 13 पे आ जाता हूं, 73 पे, टू कट इट शॉर्ट, paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की? There was an ICA, and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी फाइल कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए. बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके client हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी, पूछ लें. मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शोकॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है? नहीं, उसके अंदर ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शोकॉज दिया. उसके बाद पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया. एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई है कंप्लेंट आपकी? November 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. और कोई बात? जी सर. ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी. तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल. फिर ये कह बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज अ फाउंडिंग मेंबर. यस. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. अब पेज 220. अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है. ये गलत नहीं है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो ये कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माई नॉलेज. आपसे सो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो देम, शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231.
Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी से मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody क्या कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं पेज 100 of the PTI rules. Where will we find them on our books? जी पेज 100 of the petition, page 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहां चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है अभिषेक। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी।
या बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें। ये 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटिशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता, मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी। I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था। ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड। ये जो पिटिशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं। बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि वन, ये कौन है आपके साथ जो खड़े? My colleague Badr, he's been very kind and helpful and also maybe he's not neither kind nor helpful because he would be checking when we ask a question कि इंडियन इलेक्शन पिटिशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटिशन फाइल की। वो फिर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें और चेक तो कर लें। बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटिशन है, बट नहीं वो पिटिशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटिशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि ये दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी, ऐसा नहीं। जो मैं जिसका वो जरा ऑन अ लाइटर नोट था। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। आई होप ही डजंट माइंड। I would not be able to read all these documents without them. नहीं कह रहे हैं, बट एक्चुअली पैरा 20 में जिक्र किया। सर्टिफिकेट में नहीं है, 20 सर्टिफिकेट में, पैराग्राफ 20 में बात। एक सेकंड, ये पेज बता दें पिटिशन का। पहले पेज 38 कैंसिलेशन मेंबरशिप अभी बता। पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECB on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECB declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its result along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे साथ वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. mention किया। पेज 50 पे देखेंगे जनाब, Lordship, I just received page 50. Page 50 पे जो certificate है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ। एंड पेज 602 पे जनाब फैसला इसका, इसकी पिटीशन लिखी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़े, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज है? 602 पेज पढ़ता हूँ। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act.
2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette, under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12, 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटिशन भी बता दें किस पेज पे है? पिटिशन वाज 585 सर। जो नहीं इसका ये जो 11 इसमें are you sure? जब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटिशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब issuance on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. आगे it's missing language sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other points? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify. PTI, Pakistan. PTI Constitution. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Yeah, Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, oh sorry, नहीं, apologies. I think there's a लास्ट 2 पॉइंट सर, प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर, और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party.
if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या अफिलिएशन एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? I am now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं, जी general elections. I've not understood the point. Sorry, it was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाजे है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी, 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल में जब Badr was trying to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाजे प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना. जी ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से. खैर ये तो ओके. और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सबसेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट. बाकी अटेंडेंस. और इसी तरह से सबसेक्शन 3, anything required to be done for carrying out the purposes of this act for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you, coach. Thank you. किधर है? जी सर, आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से. पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले. किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है. ओके. जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था, तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था. So he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Anything, my lord? I just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including the reasons assigned by the petition. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes? Chronology first. My lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships.
अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें। My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी। They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13 वन सबूत है 13 की। 13 का सर, देयर इज एन ऑर्डर। 13 का एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। Just place a copy of the order before your lordship. They are all being done by one order or 13 order? By one order. ये ऑर्डर हमें दिखा दें। जी सर। So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों। इसी लिखा। Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे। If your lordship will see after the name of the parties, your lordship see on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. और आपने हमें दे दिया, इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? ये क्या दिया? ये किस ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, they order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये, अच्छा अभी ये कुछ और अच्छा ओके, ये वाला है। अच्छा ओके, गॉट इट। ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, बहावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, इनको आपने उड़ा दिया है। Yes, the discussion is in paragraph 24. नहीं ठीक है, वो हम ऑर्डर वो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि कल को हो सकता है हमारे सामने चैलेंज हो जाए। जी सर। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आपने वो क्या उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो नहीं किया। जी, एनपी को प्रॉब्लम की जो डिटेल जजमेंट हमें प्रोवाइड की गई बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी, द टाइम वाज एक्सटेंडेड अप टू 10th of May of this year. उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट। अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो। Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold an elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा, उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे, उस 5 साल के अंदर अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई है। कॉपी दे दूंगा। अच्छा ओके ठीक है, गॉट इट माय लॉर्ड। Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file ke file. Election Commission is order. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which the Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordship's. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. आपने एक reported judgment भी तो दिया था। जी सर, दो दिए थे। दिए थे ना आपने? जी सर। वो तो लगे हुए आपकी बुक में। जी सर। हाँ, वो भी लगे हुए हैं। 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे, वो अलग से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है सर। The short point to be made in that respect is
that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something? My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with two orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. Yes, sir. This is, my lord, PLD 2008, Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008, Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the... What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी. We have given वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology. My lord, insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship you want knows to the launch reason. an attack, or you withdrawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord, in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here? They are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not
eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct and they say if the commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My lord, the lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is and how it is. So what is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है जी जी वो पिटिशन का क्या नंबर है 287 that's the one they engage with 287 पहले फाइल हुई थी या 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है बट अंडर योर अकॉर्डिंग टू योर लॉर्डशिप्स जजमेंट इन द सलाहुद्दीन तिर्मिज़ी's case they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली क्योंकि या अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता. Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो ने पैराग्राफ 33 पढ़ा था जिसमें रेड पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया. That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है. Maybe. उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर में. That's correct, my lord. That's correct. क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर तो बात फिर कॉन्शियस डिसीजन हो गया. If I was a judge, I could have also committed the same mistake. ये तो हो गया क्योंकि ये पहले वाले इधर आए थे ये. I don't know, number उधर नहीं लिखा उधर. My lord, so far as my instructions are concerned, the counsel appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number, but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it. My lord, if your lordship turns to page 18 now, the question is identified. In paragraph 19, the question is identified and that's highlighted. The moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish a certificate. वही बात हो रही है उन्होंने कहा सर्टिफिकेट आ गया बस बाकी. That's it. So they say we do not need to do. आपका कहना है कि सर्टिफिकेट तो इज अ कल्मिनेशन ऑफ थिंग्स. Yes. In fact, even things follow. उनका कहना है ये नहीं सर्टिफिकेट आ गया आप हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत. जी सर. Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5) to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया. Sir. ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, My lord.
पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया? Sir, we had very initially, we had 2021 went to them without any complaints. Without any complaint. We had written. इस दफा कंप्लेंट्स आई? जी सर. We had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं. Sir, that's correct, sir. ठीक. So can you say there's a different list than the Lahore High Court, because the list in Lahore High Court pertained to not holding of elections, and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections. My lord, you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year, we gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the commission said that this 23rd June का order उन्होंने कहाँ challenge किया? उन्होंने वो order जो है वो लाहौर में challenge किया. That's WP 81171. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी. पेंडिंग है अभी. वो पेंडिंग है. तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं, इनकी बात रिट अलाउ कर देते हैं, तो वो वाले जो लोग जीते थे कौन से इलेक्शन में 8 जून या 10 जून के जीते जी, तो फिर वो बन जाएंगे. जी सर. 10 June के, there is a confusion about dates, but 8 to 10 June. That's absolutely correct, because then the second order. 8 जून है, 10 जून है. 10 जून. कभी 10 जून का है, कभी 8 जून. 8 जून का है. ये that's one of the discrepancies which the election commission also points out. इनका आपका क्या है? 10 जून है, 8 जून? क्या मौकिफ है? अली जफर साहब, वो वाला इलेक्शन 8 जून का है, 10 जून का है? 8 जून. मान लेते हैं 8 जून या नहीं? Sir, let's accept 8 June. That's correct. But if that election is held to be valid, then the second order of the election commission, which is now impugned before the Peshawar, which was impugned before the Peshawar High Court, cannot stand. If the Lahore High Court accepts that rate, this second order will fall. Either you take away the possibility. That possibility is a possibility. Yes, it is. Maybe not a probability, but it's a possibility. Yes, my lord. Yes, it is. So it is amounts to the same. That's the test, I would imagine. I don't know. My lord, that's exactly the test, and that's the test as laid down in Tirmizi and as the court said कि भाई अब तो ये infractious हो गया, अब इसको withdraw कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हम सुनेंगे, 5 मेंबर बेंच प्लीज लगा दें. जी. क्योंकि वो लर्नर सिंगल जज सेड कि भाई इलेक्शन हो गए, भाई खत्म हो गया, अब ये या कर रहे हैं आप इलेक्शन जो भी, I don't know whatever this thing is. So they kept it pending. They kept it pending and they said, no, please send it to a bench or of they 5 put it the judges. other way around. Suppose Peshawar dismissed it. So Lahore allowed it. ये भी हो सकता है? Yes, my lord. अच्छा. In either event, the submission is that on the basis of Tirmizi, the Peshawar High Court, with great respect, had no jurisdiction. If your lordship to see page. अगर हम समझे कुछ आप हमें ज्यादा बातें बताएंगे जमहूरियत के मुतालिक. My lord, may I just finish my engagement with this particular judgment? The combined page 20, the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. My lord had observed that this is a judgment in rem. Yes. Or is it not? It is, my lord, because it is under Article 201 of the Constitution, it will bind the Election Commission because it is now declaring a finding of the High Court on a question of law. So it will act as a precedent. In view of this, the Election Commission now cannot go against this finding in any case at all. It will apply in every case. This effectively, elections are over. If we uphold the judgment. Yes, my lord. So they don't need to hold then 215 is redundant. Because, my lord, if the power under paragraph subsection 5 of 215 is taken away, then the Election Commission's authority to insist that intra-party elections be held and be held in accordance with the Constitution. That's the statutory language. In accordance with the Constitution of the political party. That is the language which is repeatedly used in 209,
208, 215. Next point. My lord, if your lordship may then please graciously look at page 25, and that's the last portion I am identifying. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, if Find that word very offensive. my lord, this honorable court and the high courts can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means If it was striking it down, it could be held. yes, Maybe. yes, my lord, yes. Not very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, not to follow it on the basis that it is absurd means that they have not found it in violation of the constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये आप वो कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक इनबिल्ट implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला और इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहत हो सकती है कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My lord, I mean, I know it's a realm of speculation. Yes. You don't want to speculate, fine. My lord, I would hesitate from speculating. I would Fine, move away. fine. My lord, our respectful submission in respect of these, साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. Unless the provision has been... My lord, if subsection 5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different. But over here, the situation is that it is not struck down. It remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your lordship cannot declare it as absurd and redundant.
That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist. Noted. And the one which exists, which has been made redundant. My lord, those were all the submissions that we had to make. Did you find those orders or no? 11, 12. My lord, one of the orders is that's page 302, part 2. First year. जी My lord, that is at page 302. Your lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition will continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then if your lordship will see page 308, as the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My lord, just to attend the proceedings. So hear them out, don't pass any order. Okay. And that your lordship may turn to the next page, 309. चैलेंज में क्या किया था उन्होंने उसमें? Sir, this was the time with the show cause notice. Notice challenge की? Yes. There was no order of the commission? No, no, my lord. At that, yes. Simple show was notice challenge की है. Your lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3, if your lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम एक्शन देखना चाहते हैं. जी sir, it's at page 576, part 3. Sir, the page देखा 596. ये चैलेंज की थी? जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया तो कुछ If और. your lordship may turn to the petition, that, my lord, is there at page 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If your lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? ये तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and your lordship will see the first page of the petition. No, I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. My lord, yes. Your notice is 12/12/2023. My lord, yes. So I don't think this was under challenge. My lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. जी. 585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice under challenge. Yes, the prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना petition. If your lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये symbols दे दीजिए. if your lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592. Application for interim relief. And your lordship will then see at page 594, page paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी. Yes, my lord. Yes, इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी. ये इन्होंने amend नहीं किया मगर they brought it on record. They brought it on record. Got it. And if your lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended.
and impugned notice be suspended. That is added by hand. अमेंड नहीं करना चाहिए थी. My lord, it ought to have been presented. Application 151. Yes, sir. It's mentioned in paragraph 5, the notice is mentioned in paragraph 8. Again. Got it. So it's mentioned in 2 paragraphs. ये जो स्टे ऑर्डर्स वन एंड दिस इज वो स्टे ऑर्डर्स में सीएम नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है. ये पहली पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पेशावर में 5791. शख्स कौन था? My lord, I'll just give it to your lordship in a minute. This is page 585. कौन बंदा था? Sir, it is page 585, Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, वो शख्स कौन है? Muhammad, Through its authorized person. वो कौन है authorized person? My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page. Malik Anwar Taj. Malik Anwar Taj, उनका affidavit लगा है 596 and he is also the petitioner number 3. इधर ना वो है क्या नाम है? उमर सेक्रेटरी जनरल इनके कौन है? उमर अयूब सर. इस वक्त तो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे या ये थे? नहीं सर, ये नहीं. मलिक अनवर ताज थे. No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't, he is, as your lordship will see, he is vice president PTI KPK. ठीक. बस. My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over. और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab. And Mahdum Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, you all argued very well. I wish you had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. I can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much.